नमस्कार दोस्तों। आज की इस इम्पोर्टेंट स्कीम में आपका स्वागत है। आज हम तीसरे भारत पाकिस्तान युद्ध के बारे में बात करेंगे जो 1971 में हुआ था और जिसके बाद ईस्ट पाकिस्तान का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया था। पाकिस्तान को तोड़ दिया था और बांग्लादेश नाम के एक नए देश का उदय हुआ था। स्ट्रीम शुरू करने से पहले मैं स्ट्रीम का लिंक दे देता हूं आप लोगों के लिए, जिसको जुड़ना है वो जुड़ सकता है। ये स्ट्रीम का लिंक है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। जैसा कि हमने कल की स्ट्रीम में बताया था कि ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान की फौजों ने काफी अत्याचार किया। वहां पर उर्दू जबरदस्ती थोपी जा रही थी, जिसका कि ईस्ट पाकिस्तान के बंगाली लोगों ने काफी विरोध किया और उस चक्कर में वहां पर आंदोलन चला। और बाद में फिर वहां जब 1970 के दिसंबर के महीने में पहली बार इलेक्शन हुए पाकिस्तान में, तो अवामी लीग जो मुजीबुर रहमान साहब लीड कर रहे थे वो जीत गई। और उसके बाद वहां के पाकिस्तान के मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जनरल याहिया खान ने जुल्फकार अली भुट्टो के कहने पर मुजीबुर रहमान को गद्दी सौंपना उचित नहीं समझा। जुल्फकार अली भुट्टो उस समय पाकिस्तान पीपल पार्टी के नेता थे, जो बाद में बेनजीर भुट्टो और उसके बाद आज की डेट में जो आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो हैं, ये लोग हैं। तो जब अवामी लीग को सत्ता नहीं मिली तो ईस्ट पाकिस्तान में बहुत बड़ा आंदोलन चला और उसमें पाकिस्तान की फौजों ने काफी नरसंहार किया, जिसे हमने कल कवर किया है। और उस पाकिस्तान की फौज का मुकाबला करने के लिए जो बांग्लादेश के लोग थे, जो बांग्लादेश के फौजी थे, उन लोगों ने एक मिलिटेंट फोर्स का गठन किया, जिसको उन लोगों ने मुक्ति वाहिनी के नाम से नाम दिया। और इसमें ज्यादातर बांग्लादेश के ईस्ट पाकिस्तान के वो फौजी लोग थे जो सर्विस में थे। दादा नमस्कार। आज आपने राहुल गांधी का न्यूज सुना? जी सर। अब क्या होगा? तस्वीर मचेगा ये तो मुझे नहीं लग रहा कोई फायदा होगा। आज थर्सडे नाइट है ना, तो मतलब कल का दिन है उनको हाई कोर्ट मूव करने का। कल पकड़ेंगे, लेकिन मुझे नहीं तो लग रहा कल थोड़ा ना सुनवाई होगी हाई कोर्ट में, वो तो मंडे को ही होने वाली है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो आज तारीख क्या है? 20 है सर। और 22 तारीख को इनका पूरा महीना भर हो जाता है। 24 तक। तो 21 तारीख को, मतलब 21 तारीख को अगर सुनवाई नहीं हुई तो 22 तारीख को तो सैटरडे पड़ता है, 22 तारीख को इनका महीना पूरा हो जाता है। तो ही हैज टू गो टू जेल। He'll try his level best. कल ट्राई करेंगे। Because we do not know that there is also Pakistan, they lead the people, they might take up the case. Nobody knows. लेकिन I don't think some good will come out of it. उनका कोई फायदा होगा मुझे नहीं लग रहा। दादा आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, थोड़ा सा ठीक। अभी आ रही है? अभी आ रही है? अभी भी नहीं आ रही है? बहुत कम आ रही है, मतलब मुझे कम सुनाई दे रही है, पता नहीं पब्लिक मैं देखता हूँ। क्या इनकी आवाज सुनाई दे रही है ठीक से? मैं देखता हूँ सर, मैं देखता हूँ।
आप बेहतर है सर, थोड़ा सा पहले से बेहतर है सर। नहीं, सेम है। एक काम करो, तुम हेडफोन हटा दो, शायद तो ठीक हो जाएगा। जैसा दूसरा लगा लेता हूँ। हेडफोन हटा करके सीधा बात करो डायरेक्ट। जी सर, अब आ रही है आवाज? अब आ रही है सर? उसको बंद कर दो। हाँ, अभी आ रही है, ठीक आ रही है। ये हेडफोन कभी कभी गड़बड़ करता है। अब ठीक बोलो है कुछ। सर? हाँ, नहीं, वो हेडफोन को बंद कर दो, शायद हेडफोन से भी ले रहा है वो आवाज को, ऐसा कुछ इको हो रहा है। मैं निकाल दिया हूँ सर। हेडफोन को बंद कर दिया? निकाल दिया सर। अच्छा, हाँ ठीक है। निकाल दिया। हाँ ठीक है, अब आवाज ठीक है रही है। तो इससे पहले कि हम स्ट्रीम शुरू करें, हम चाहते हैं कि 2 मिनट का साइलेंस, जो 5 आर्मी के जवान मरे हैं पुंछ में, जिनके ऊपर ग्रेनेड अटैक किया गया था, उनके बारे में थोड़ा सा, उनकी आत्मा को शांति के लिए थोड़ा शांत रखें तो अच्छा रहेगा। अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। जी सर। सुनाई पड़ रहा है मेरी आवाज? हल्की सी आ रही है सर। लगाओ फिर हेडफोन लगाओ, देखो, चलो उसी तरीके से करते हैं, क्या करें। ठीक है सर, पहले से बेहतर है सर। वॉल्यूम बढ़ा? जी सर। बढ़ा वॉल्यूम, अभी बोलो। जी सर, एक सेकंड। कहाँ से पढ़ूं सर? नहीं, वॉल्यूम बढ़ाओ, आपका वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है, चलो। अब ठीक है सर? हाँ, देखो। जी सर। The Mukti Vahini. The Mukti Vahini translates as freedom fighters or liberation army, also known as the Bangladesh forces, was the guerrilla resistance movement consisting of the Bangladeshi military, paramilitary and civilians during the Bangladesh Liberation War that transformed East Pakistan into Bangladesh in 1971. They were initially called the Mukti Force. On 7th of March 1971, Sheikh Mujibur Rahman issued a call to the people of East Pakistan to prepare themselves for an all-out struggle. Later that evening, resistance demonstrations began, and the military began a full-scale retaliation with Operation Searchlight, which continued throughout May 1971. A formal military leadership of the resistance was created in April 1971 under the Provisional Government of Bangladesh. The military council was headed by General M. A. G. Osmani.
and 11 sector commanders. The Bangladeshi armed forces were established on 4th of April 1971. In addition to regular units such as the East Bengal Regiment and the East Pakistan Rifles, the Mukti Vahini also consisted of the civilian Gano Bahini People's Force. The most prominent divisions of the Mukti Vahini were the Z Force, led by Major Ziaur Rahman, the K Force, led by Major Khalid Musharraf, and the S Force, led by Major K.M. Shafiullah. Awami League student leaders formed militia units, including the Mujib Bahini, the Qadr Bahini, and the Himayat Bahini. The Communist Party of Bangladesh, led by Comrade Muni Singh and activists from the National Awami Party also operated several guerrilla battalions. Using guerrilla warfare tactics, the Mukti Bahini secured control over large parts of the Bengali countryside. It conducted successful ambush and sabotage campaigns and included the nascent Bangladesh Air Force and the Bangladesh Navy. The Mukti Bahini received training and weapons from India. The people in West Bengal shared a common Bengali ethnic and linguistic heritage with East Pakistan. During the Indo-Pakistan War of 1971, the Mukti Bahini became part of the Bangladesh-India Allied Forces. It was instrumental in securing the surrender of Pakistan and the liberation of Dhaka and other cities in December 1971. Organization: the Mukti Bahini was divided into two groups: the Niyomito Bahini, or regular forces, who came from the paramilitary, military and police forces of East Pakistan, and the Gano Bahini, or People's Force, who were civilians. These names were given and defined by the government of Bangladesh. The Indians referred to the Niyomito Bahini or Mukti as Mukti Fauj, and the Gano Bahini were called freedom fighters. Background: East Pakistan campaigned against the usage of Urdu as the sole official दादा language ये of पढ़ Pakistan. लिया हम लोगों ने, कल छोड़ देते हैं इसको. All पढ़ लिया सर. On 7th of March 1971, Sheikh Mujib made his now famous speech in Ramna Racecourse, Suravardi Udyan, where he declared, "The struggle this time is for our freedom. The struggle this time is for our independence." East Pakistan television broadcasters started broadcasting Rabindranath songs, a taboo in Pakistan, while reducing the airtime of shows from West Pakistan. Civilian interaction with the Pakistani army were decreased, and they were increasingly seen as an occupying force, while local contractors stopped providing supplies to the Pakistan army. The Pakistan Army also tried to disarm and dismiss personnel of Bengali origin in the East Pakistan Rifles, the police, and the regular army. The Bengali officers mutinied against the Pakistan Army and attacked officers from West Pakistan. The Pakistan Army's crackdown on the civilian population had contributed to the revolt of East Pakistani soldiers. The East Pakistani soldiers moved to India and formed the main body of Mukti Bahini. Sheikh Mujib, on 26th of March 1971, declared the independence of Bangladesh, while Pakistan's President Yahya Khan declared Mujib a traitor during a national broadcast on the same day. The Pakistan Army moved infantry and armored units to East Pakistan in preparation for the coming conflicts. Early resistance. On 25th of March, martial law was declared. Sheikh Mujibur Rahman was arrested and Operation Searchlight started in East Pakistan. Foreign journalists were expelled and the Awami League was banned. Members of the Awami League, the East Pakistan Rifles, the East Bengal Regiment, and others thought to be disloyal to Pakistan were attacked by the Pakistani army. The survivors of the attack would form the backbone of the Mukti Bahini. When the Pakistan Army started the military crackdown on the Bengali population, they did not expect prolonged resistance. 5 battalions of the East Bengal Regiment mutinied and initiated the war for liberation of Bangladesh. On 27th of March, Major Ziaur Rahman declared Bangladesh's independence from Pakistan and fought his way out of Chittagong city with his unit of Bengali soldiers. The East Pakistan Rifles and the East Pakistan Police
suffered heavy casualties while challenging the Pakistan Army. In Dhaka, where West Pakistani forces began the 1971 Bangladesh genocide with a massacre at Dhaka University. Civilians took control of arms depots in various cities and began resisting Pakistani forces with the acquired weapon supply. Chittagong experienced heavy fighting between rebel Bengali military units and Pakistani forces. The Bangladeshi Declaration of Independence was broadcast from Kalurghat radio station in Chittagong by Major Rahman on behalf of Sheikh Rahman. Bengali forces took control of numerous districts in the initial months of the war, including Brahmanbaria, Faridpur, Barisal, Maimansingh, Komila, and Kushtia, among others. With the support of the local population, many towns remained under the control of Bengali forces until April and May of 1971. Notable engagements during this period included the Battle of Kamalpur, the Battle of Darwin, and the Battle of Rangamati Mahalchari Waterway and the Chittagong Hill Tract. On 18th of April, the Deputy High Commissioner of Pakistan in Kolkata defected and hoisted the flag of Bangladesh. On 17th April, the Mujib Nagar government was formed. During May, Foreign Minister Zulfikar Ali Bhutto asked General Yahya Khan to hand over power in West Pakistan to his party. Khan refused on the grounds that doing so would support the view of Mukti Vahini in the provisional government of Bangladesh that East Pakistan was a colony of West Pakistan. Tensions were raised when Bhutto told his followers that by November he would either be in power or in jail. On 9th of June, Mukti Vahini members hijacked a car and launched a grenade attack on Dhaka Intercontinental Hotel, the office of the pro-junta Morning Post, and the house of Ghulam Azad. July to November. The Mukti Vahini divided the war zone into 11 sectors. The war strategy included a huge guerrilla force operating. Do we need to read this? No, I don't think so. अगस्त वाला पढ़ना है. Yes, इसको पढ़ो. August. After a visit to East Pakistan refugee camps in India in August 1971, U.S. Senator Ted Kennedy believed that Pakistan was committing a genocide. Ghulam Azad called for Pakistan to attack India and to annex Assam in retaliation for India providing help to the Mukti Vahini. Azam accused India of shelling East Pakistani border areas on a daily basis. Oxfam predicted the deaths of over 100,000 children in refugee camps and that more could die from food shortages in East Pakistan because of the conflict. In September, regular Mukti Vahini battalions were formed, increasing the effectiveness of the Mukti Vahini. Sabotage and ambush missions continued to be carried out, demoralizing the Pakistani army. In October, conventional Bangladeshi forces mounted various successful offensives, capturing 90 of the 300 border outposts. The Mukti Vahini intensified guerrilla attacks inside Bangladesh, while Pakistan increased reprisals on Bengali civilians. So the movement of Mukti Vahini into, out of, and inside East Pakistan became easier and more common. In November, Indian involvement increased, and the Indian artillery and the Indian Air Force providing direct cover for the Mukti Vahini in some offensives. Attacks on infrastructure and the increase in the reach of the provisional government weakened the control of the Pakistan government. Air operation. एक मिनट. दीप नमस्ते. नमस्कार दादा चांद स्पर्श. हेम दादा नमस्कार चांद स्पर्श. नमस्ते. चलो तुम पढ़ना शुरू करो. दादा की आवाज थोड़ा गड़बड़ हो रही है. पब्लिक बोल रही नॉट क्लियर लिख रही है. अभी भी क्लियर नहीं है सर. माइक चेंज कहाँ पे हो गया था? एयर ऑपरेशंस पे. हाँ, यहाँ से एयर ऑपरेशन. Air operations. The Bangladesh Air Force (BAF) was established on 28 September 1971 under the command of Air Commodore A.K. Khandkar. It initially operated from a jungle airstrip near Dimapur in Nagaland, India. When taking over liberated territories,
the Bangladesh forces gained control of the World War II airstrips in Lal Monirhat, Salmatikar, Silhat and Komila. Salautikar, Sylhet, and Comilla. In November and December, the BAF launched kilo fights under the command of squadron leader Sultan Mahmud on 3rd December 1971. Sorties by Otter DHC-3 aircraft destroyed Pakistani fuel supplies in Narayanganj and Chittagong, where targets included the Burma oil refinery, numerous ships, and oil depots. Naval operations. The Bangladesh Naval Forces took shape in July. Operation Jackpot was launched by the Bangladesh Forces on 15th August 1971. Bangladesh Navy commandos sank vessels of the Pakistan Navy in Mongla, Chittagong, Chandpur, and Narayanganj. The operation was a major propaganda success of Bangladeshi forces as it exposed to the international community the fragile hold of the West Pakistani occupation. The Bangladesh Navy commandos targeted patrol craft and ships carrying ammunition and commodities. With Indian aid, the Mukti Vahini acquired two vessels, the Padma and Palash, which were retrofitted into gunboats with mine-laying capabilities. The boat crews extensively mined the Paso River in the Sundarbans, reducing the ability of Pakistani forces to operate from the port of Mongla, but were mistakenly bombed by Indian Air Force troops that resulted in the loss of both vessels and some of the lives of Mukti Vahini Mukti Vahini and Indian personnel on board. The developing Bangladesh Navy carried out attacks on ships and used sea mines to prevent supply ships from docking in East Pakistan ports. Frogmen were deployed to damage and sabotage ships. वेट प्रदीप वेट. अब ये बताओ, कोई बेवकूफ ही है जो समझेगा कि इंडिया सपोर्ट नहीं कर रहा था. इंडिया इज सपोर्टिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. नागालैंड में अपना दीमापुर का एयरपोर्ट वो एयरबेस दे रहा है. उनकी शिप को अटैक करने के लिए उनको पेट्रोल शिप दे रहा है. क्या मतलब, इन्वॉल्व तो शुरू से ही था वो. हाँ, तो ये अगर शुरुआत से इन्वॉल्व नहीं होता तो इसको सारी चीज़ें मालूम थोड़ी ही होती. दूसरी चीज़, थोड़ा सा ये विकीपीडिया मिसलीडिंग है. मैं वो क्लैरिफिकेशन कर दूं. पहले शुरुआत में ज़्यादा लेके जाओ, उसके बाद आप वापस ऑर्गेनाइजेशन पे आ जाना. एकदम स्टार्टिंग में. हाँ, यहाँ पे इस जगह से. हाँ, और थोड़ा सा ऊपर डाला. ये राइट साइड वाला आपको पूरा दिखाना पड़ेगा, जो अपोनेंट फोर्सेस. और हाँ, ये लीडर्स हैं. लीडर्स तक तो चलो ठीक है. उसके नीचे आप चलिए. ये आवाज सही आ रही है क्या? अभी आवाज सही आ रही है? ठीक है. इसमें कुछ चीज़ें हैं कहने वाली. एक्टिव रीजन्स ईस्ट पाकिस्तान दिखा रहा है. बंगाली नेशनलिज्म, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, जैसे ही इस्लाम वहाँ डोमिनेट करा, ये सब खत्म हो गया वहाँ भी. उसके बाद दूसरा जो है एलाइज. ठीक है, सोवियत यूनियन एंड इंडिया. ठीक है, सोवियत यूनियन का इसमें कोई खास रोल नहीं था सिवाय उसको रोकने के लिए जो रास्ते में खड़ा हो गया था जाके, इतना रोल था. बट यहाँ पे अलाइज वगैरह करके दिखा दिया जैसे वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा था वॉर के अंदर. सोवियत यूनियन, ये सिर्फ जो आपका ये यूएस और इनके नेटो की फोर्सेस थे उनको रोकने के लिए आगे खड़ा हो गया था अपनी वो लेके सबमरीन्स लेके. ठीक है. दूसरा, पाकिस्तान को अकेला दिखा दे दिया. यहाँ भी जो है ये इसको विक्टिम बनाने की कोशिश कर रहा है. ठीक है. इसके साथ में नेटो था जो कि अटैक करने के लिए शिप्स भेज रहा था पूरी अपनी जो है, और अमेरिका था जो कि पूरा का पूरा अपना बैरी बेड़ा भेज रहा था. 7th फ्लीट थी शायद, है ना दादा?
जी तो ये सारी चीजें इनकी एक्सपोज करनी यहीं पे जरूरी थी। जो अलाइज नहीं थे वो अपोनेंट में दिखा दिया कि इंडिया और रसिया दोनों मिलकर लड़ रहे थे, और उन जो यहाँ अटैक करने आ रहे थे अमेरिका और नेटो, उनको दिखा दिया ये थे ही नहीं, पिक्चर से ही गायब। ये करता विकिपीडिया। तो पढ़ लिया ना हाँ हम लोगों ने। हाँ ठीक है, अभी जी क्या है ये नहीं पढ़ते हम लोग, इसको जाने थे। ये कल हमने देखा था कौन कौन था, क्या क्या था, थोड़ा ये पढ़ना तो। इक्विपमेंट। हम्म। The Mukti Vahini benefited from the early control of Pakistani armed depots, which were overtaken by Bengali forces during March and April 1971. The Mukti Vahini purchased large quantities of military-grade equipment through the arms market in Calcutta, including Italian howitzers. एक मिनट, Along, हाउ 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 मुक्ति वानी परचेज, उनके पास पैसा कहाँ से आ रहा था? हमें दे रहे थे सर, पैसे। सर पैसा कुछ तो जो है पाकिस्तान की भी करेंसी रही होगी। किसके पास? वो कंट्रोल तो उनके पास ही था ना, बैंक तो उनके पास ही था, उनके पास पैसा कहाँ से आया? तो फिर लिए होंगे, इंडिया से लिए होंगे, कुछ ना कुछ तो करा ही होगा, कहीं ना कहीं से हाँ, तो तो जुगाड़ करा वही है होगा ना, इन्होंने। कि जो परचेज लिख रहा है ये गलत लिख रहा है ना। फिर अभी बहुत ये कुछ आर्म्स, हमारे को सिर्फ अच्छा इवेंट में आर्म्स, जानना है यार, सर अल्टीमेटली ये जाने आर्म्स मार्केट इन कैलकाटा जो बता रहे हैं, आर्म्स मार्केट इन कैलकाटा, आई एम नॉट अवेयर ऑफ सच आर्म्स मार्केट। ये कोई पेशावर थोड़ी है। वहां पर क्या लिख रहा है? हुडजर एंड अलर्ट और हेलीकॉप्टर मिल रहे थे ये सब मिलता है कलकत्ता में। कलकत्ता में। ये खिलौना है बच्चे का। हाँ दादा, बहुत सारी दुकानें यहाँ भी तो बनाती तो हेलीकॉप्टर, अरे ये बच्चे कलकत्ता ले में लेके। थोड़ी है। अरे अरे डकोटा DC-3 यार, ये तो एयरफोर्स ये का बहुत बड़ा प्लेन है, कहाँ से मिला बहुत इनको? बड़ा प्लेन है। अरे दादा सब मिलता है, वो क्या नाम है, बच्चे चलाते नहीं है इतना, तो आपने देखा होगा। हम्म। अब तो F-22 भी आ गए हैं, उसमें बच्चे चला रहे हैं सारे हमारे। अब अगला सेंटेंस पढ़ो। द मुक्ति वानी also received a limited supply of equipment from Indian military as New Delhi allowed the Bangladeshi forces to operate an independent weapon supply through Calcutta port. द 10 मुक्ति guns, वाहिनी Lee यूज Enfield. 10 guns, Lee Enfield rifles and Indian made hand grenades. Some of the ये मिल arms जाएगा। and equipment used by Mukti Vahini are given below. यार देखो Smith and इंदिरा जी ने, छोड़ इनको नहीं पढ़ना है। अरे बाप रे, ये अलाइड फोर्सेस पढ़ो तो। तो आवाज अभी सही आ रही है सर? हाँ आ रही आ रही है। the पढ़ूं launch सर? of Operation अच्छा Changiz अच्छा, Khan उनको by पढ़िए आप पढ़िए। the launch of Operation Changiz Khan by West Pakistan in North India finally drew India into Bangladesh conflict, and a joint command structure was established between the Bangladesh and the Indian forces. The corps of Indian armed forces were supported by 3 brigades of the Mukti Bahini and the Bengali guerrilla army. The Mukti Bahini and its supporters guided the Indian army and provided them with information about Pakistani troop movements. The Indian and Mukti Bahini greatly outnumbered the 3 Pakistani army divisions in East Pakistan. The battle वैसे दादा इसको भी क्लियर कर दूं, ये भी गलत बोल रहे हैं, आउट नंबर नहीं हुए थे, ठीक है, ये चीज भी गलत है। द बैटल ऑफ Sylhet and Battle of Garibpur, the Battle of Boira and Battle of हिली, Hilli, and the Battle of uh, कुश्तिया Kustia कुश्तिया। were major joint engagements from Bangladeshi and Indian forces, who swiftly captured surrounding land by selectively engaging or bypassing heavily defended strongholds. For example, the मेघना Meghna हेली ब्रिज। Heli Bridge. Meghna Heli Bridge airlifted Bangladeshi and Indian forces from Brahm, ब्राह्मणबाड़ी है। Brahmabaria and Narsingdi over Pakistan defended
Ashuganj. The cities the cities of Jessore, Memon Singh, Jessore, Tilhat and Kusita. Maimansingh, Sylhet, Kushtia, Noakhali, Maulvi Bazar quickly fell to the Mukti Vahini Indian Joint Forces. In Dhaka, the Pakistan Army and its supporting militias began the mass murder of Bengali intellectuals and professionals in the final attempt to eliminate Bengali intelligentsia. The historian Yasim Yasmin Yasmin Saikia. Saikia writes that the Mukti Bahini, Indian Air Forces and Pakistan Army and pro-Pakistani militias looted, raped and killed civilians in East Pakistan. The Mukti Bahini liberated most of the Dhaka district by mid-December. In the western Pakistan, Indian Air Forces advanced deep into the Pakistani territory as the port of Karachi was subjected to the naval blockade by Indian Navy. Pakistani generals surrendered to the Mukti Bahini Indian forces in Dhaka on 16 December 1971. पूरी कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की कि हाँ वो जो है उन्होंने मर्डर चालू कर दिया, ये चालू कर दिया, वो चालू कर दिया, ताकि इंफॉर्मेशन नहीं जाए। हमारे इलेक्शन कब खत्म हुए थे? हमारे इलेक्शन 10th of March 1971. ओके, तब तक मैडम शांति से बैठी हुई थी। जैसे ही इलेक्शन में जीत गई उसके बाद में उंगली करनी शुरू कर दी। इसका ये पढ़ो, इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी अथराइज डिप्लोमेटिक, ये पढ़ो। Indian Prime Minister Indira Gandhi authorized diplomatic, economic and military support to the Bangladesh forces. In April 1971, the Provisional Government of Bangladesh established its secretariat in exile in Calcutta. The Indian Armed Forces provided substantial training and the use of its bases for the Bangladeshi forces. The Bangladesh Liberation Guerrillas operated training camps in the Indian states of Bihar, Arunachal Pradesh, Assam, Nagaland, Mizoram, Meghalaya, Tripura, and West Bengal. Mukti Bahini were allowed by India to cross the border at will. Some Mukti Bahini, especially those who served in the security services of Pakistan, were suspicious of Indian involvement and wished to minimize its role. They also resented the formation of the Mujib Bahini by India, which was composed of Sheikh Mujib loyalists but was not under the command of Mukti Bahini or the provisional government of Bangladesh. On 6 December 1971, India officially recognized Bangladesh as an independent country. Only hours after Bhutan did the same. अभी क्या हुआ है? भूटान को बोला होगा इंडिया ने कि पहले तू रिकॉग्नाइज कर, फिर हम रिकॉग्नाइज करते हैं। We will only first recognize. नहीं, भूटान से पहले करवा दिया था। नहीं, पहले भूटान किया, उसके बाद हम लोग किए। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, भूटान से पहले करवा दिया था, उसके हाँ, बाद हाँ, बोल कर। ये पढ़ो, International relations. The Soviet Union threw its weight behind the Bangladesh forces and India after being convinced of Pakistan's unwillingness for the political solution. Separately, US efforts to woo China through Pakistan led to India signing a friendship treaty with Moscow in August 1971. India increased support to Mukti Bahini after the signing of the treaty. For India, the treaty was an important insurance policy against a possible Chinese intervention on the side of Pakistan. China had fought a brief war with India in 1962. Both US and China, however, ultimately failed to mobilize adequate support for Pakistan. अब आ गया ना ये चाइना और वो भी आया ना यूएस, कितना उसमें कितना दिखा रहे हैं। किसिंजर और हेनरी क्या क्या बकवास कर रहे थे वहां पर।
आप देखो, मैं बोल रहा था नीचे बीच में, मतलब वहाँ नहीं दिखाएंगे कि ये नहीं, ये अलाइज थे, चाइना, यूएस, नेटो, ये सब मिलके इंडिया से लड़ रहे थे, और इंटरवीन रशिया ने किया था सिर्फ खड़े होने के लिए, दिखाने के लिए कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, तुम आगे नहीं जाना। सबमरीन्स वहाँ खड़ी कर दी थी ले जाके, उसको दिखा दिया कि नहीं, इंडिया और जो है सोवियत यूनियन सपोर्ट कर रहा था इनको, युद्ध लड़ रहा था, पाकिस्तान बेचारा अकेला था। और दादा सिर्फ पाकिस्तानी नहीं था, उन्होंने अपने टेररिस्ट भी उतार रखे थे। ये पूरा नहीं दिखाया, मैं आपको दिखाता हूँ पूरा क्या है। अभी 1 मिनट दिखा रहा हूँ। क्या वो गर्मी बहुत है? हाँ जी। हाँ, मुझे फैन चलाना पड़ रहा है। तो शिमला एग्रीमेंट हो गया क्या? क्या? शिमला एग्रीमेंट अभी नहीं, अभी नहीं तो हम हुआ है। लोग अभी तो बात अभी कर रहे लड़ाई हैं। तो कर लो यार, उसके अभी बाद तो मुक्ति एग्रीमेंट अच्छा, पे अभी होंगे। लड़ाई चल रहा है। अभी लड़ाई चल रही है, रुक जाओ। अच्छा, जरा वो बात डिस्कस कर लेना जिससे, मतलब यूएसएसआर के साथ हमारा एक संधि हुआ था ना, जिससे अगर इंडिया पे हमला होगा तो अटैक ऑन यूएसएसआर समझा जाएगा। वो संधि वाला कहाँ पे है? इधर में इसमें आएगा, इंडो पाक वार में आएगा, वो बीच में आ जाएगा। हाँ, वही तो पूछा। तो पता नहीं इसके बारे में, वो संधि क्या था पता नहीं। बोलो। प्रदीप को दिखा रहा है ना? आप कंटिन्यू अभी करो, तो मैं कुछ नहीं रहा। ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने वो जो है पूरे बदल दिए हैं। मैं कैश कॉपी देखता हूँ, कैश कॉपी मिल जाती तो फिर दिखाता हूँ आपको। दिख रहा है? जी हाँ, सर, लोडिंग हो रहा है। देख रहे हैं सर। अभी आवाज ठीक है सर? आवाज ठीक है सर? आवाज ठीक है, हाँ। The Indo-Pakistani War of 1971 was a military confrontation between India and Pakistan that occurred during the Bangladesh Liberation War in East Pakistan from 3rd of December 1971 until the, liber- the until the Pakistani capitulation in Dhaka on 16th of December 1971. Official de jure war began with Pakistan एक मिनट Air एक Force. मिनट एक मिनट एक्सप्लेन द ओके, टर्म ओके। डिजोरे। Official de jure war, that means the war which is officially recognized. लड़ाई पहले से चल रही थी, लेकिन ऑफिशियली हाँ, declared, began the Pakistan Air Force affiliated Operation Genghis Khan, which consisted of preemptive aerial strikes on 11 Indian air stations, resulting in minor damages and suspension of counter-air operations for mere few hours. The एक strikes led. मिनट वेट दादा, Yes, sir. दादा एक मिनट। नाउ लेट अस गो इनटू ऑपरेशन चंगेज खान व्हिच वाज लॉन्च्ड बाय पाकिस्तान। पाकिस्तान ने उंगली की थी। लेट द पब्लिक बी क्लियर, ये क्या है? लो दादा, हाँ, आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, दोनों आमने सामने रख के, ठीक है। इधर ये है। पहला वाला विकिपीडिया मैं आपको दिखाता हूँ, फिर दूसरा वाला उसी के साथ ही शिफ्ट कर दूंगा, दूसरे पे आ जाऊंगा। क्या दिखाने वाले हो? ये जो है अभी इसमें आपको दिख रहा होगा,
ठीक है, अभी आपको इसमें सिर्फ ये दिख रहा होगा कि पाकिस्तान अकेला है। ठीक है, अभी मैं इसके बाद इसकी कैश कॉपी दिखाता हूँ। ये देखिए, ठीक है, पाकिस्तान बेचारा अकेला है, इंडिया और बांग्लादेश मिलके लड़ रहे हैं उसके साथ। ठीक है, अब ये इसकी कैश कॉपी है। ठीक है, ये देखिए कितने लोग सपोर्ट कर रहे थे इसको। 1 2 3 4 5 6। अच्छा, यहाँ पे इसमें इसराइल है भी है। इंडिया के साथ है ना, सोवियत यूनियन, इसराइल, और इनके साथ है यूएस, यूके, चाइना, ईरान, सिलोन मतलब श्रीलंका, सऊदी अरेबिया। ठीक है, ये चालाकी करते ही है, जानबूझ के अपडेट करते रहते हैं अपने बायसेस के लिए जी जी। कि पाकिस्तान को बेचारा दिखा दें। ठीक है दादा, ये कहानी होती है इनकी, इसीलिए मैंने आपको पुरानी कैश कॉपी निकाल के दिखाई गई है। जी जी। अब दोनों में आपको डिफरेंस मालूम चल जाएगा। पढ़े इंद्र, इंडिया पाकिस्तान वॉर। हाँ दादा, आप पढ़ो, मेरे को सिर्फ दिखाना था कि ये किस तरीके से विकीपीडिया अपने बायसेस दिखाता है। पढ़ूं तो सर? हाँ, मैं स्टॉप कर रहा हूँ, आप दादा अपना शेयर करो। ठीक है। ऑपरेशन चंगेज खान। Operation Genghis Khan. Operation Genghis Khan was the code name assigned to plan Pakistani air and land offensives into India during the Indo-Pakistani War of 1971. The plans for the operations were approved in September 1971. The operation began with Pakistani Air Force airstrikes on the forward air bases and radar installations of the Indian Air Force, meant to at least temporarily neutralize the Indian Air Force in the West. The strikes marked the formal initiation of hostilities of the Indo-Pakistani War of 1971. The air strikes targeted 11 of India's airfields and also included artillery strikes on Indian positions in Kashmir. The targets were the Indian air bases of Amritsar, Ambala, Agra, Avantipur, Bikaner, Halwara, Jodhpur, Jaisalmer, Pathankot, Bhuj, Srinagar, and Uttaral, and air defense radars at Amritsar and Faridkot. Notwithstanding the multiplicity of targets, the Pakistani airstrikes did not inflict the scale of damage envisioned by Pakistani planners, inflicting minor damage to most airfields instead of neutralizing the Indian Air Force entirely. Under Operation Genghis Khan, the Pakistani Army's Second com. second course was to launch a grand counter-offensive into Indian Punjab. However, on 16th of December, new instructions arrived from Army headquarters freezing all movements until further notice. The following day, a ceasefire came into effect. Pakistan's refusal to launch the second course offensive has been a topic of great controversy among commentators reflecting on Pakistan's conduct of the war in the West. Background: the strategy of preemption. By October 1971, the Mukti Vahini had started launching massive raids deep into East Pakistan with alleged active support of the Indian Army troops. The situation had deteriorated to a state of active, undeclared war in the east by the end of November, when Indian and Mukti Vahini forces launched offensives on both the eastern and western borders of East Pakistan. Regular Indian Army troops engaged and mauled Pakistani armor at Garibpur, during which the two including Pakistani Air Force jets were shot down and another badly damaged in the Battle of Boira, while offensive maneuvers were launched in Atgram against Pakistani border posts and communications centers along the eastern border. The Mukti Bahini also launched an offensive on Jessore at that time. It was clear to Islamabad by this time that open conflict was inevitable.
and that East Pakistan was indefensible in the long run. Yahya Khan chose at this point to try to protect Pakistan's integrity and to hold India by Ayub Khan's strategy. The defense of East Pakistan lies in the west. This policy made the assumption that an open conflict with India would not last long due to international pressure, and since East Pakistan was undefendable, the war effort should be concentrated on occupying as large an area of Indian territory as possible as a bargaining tool at the negotiating table. To this end, General Tikka Khan had proposed an offensive into India, and the Pakistani Air Force's overriding priority was to give maximum support to this offensive. The initial plans for the offensive called for at least a temporary cover of air dominance by the Pakistani Air Force, under which Khan's troops would conduct a lightning campaign deep into western India before digging in and consolidating their position. In order to achieve air dominance, Pakistan decided to launch an offensive counter-air strike, codenamed Operation Genghis Khan, on Indian air bases. The second objective of the Pakistani Air Force was to conduct air interdiction against the supply routes for the Indian troops opposing Khan's proposed offensive, but these were accorded as secondary targets to be engaged after the operation started. The Pakistani Air Force's the, deci- the decision to hit India with preemptive airstrike was taken on 30th of November 1971 during a meeting among the Pakistani President General Yahya Khan, Chief of Army Staff General Abdul Hamid Khan, and the Chief of General Staff Lieutenant General Gul Hassan Khan. The objectives of the strike were to surprise the Indian Air Force by attacking its forward airfields when it was least expected, to neutralize these in order to obtain at least temporary battlefield air superiority in the west, to counterbalance the Indian numerical advantage by hitting the forward operating bases of the Indian Air Force as a measure reducing the weight of expected counterattacks on Pakistan Air Force's own bases. To achieve surprise, the decision was made to strike on a Friday, the day of Jummah, at 17:45 hours, when shifts in the Indian Air Force's control centers were changing, emulating its operations experience in battle against the Indian Air Force during the Indo-Pakistani conflict of 1975. The decision was made to hit the Indian bases in a two-wave dust strike, followed by a number of night interdiction missions throughout the night. The plans for the strike also anticipated the Indians securing the aircraft in blast pens, also anticipating difficulty in target acquisition for camouflage targets such as fuel tanks, ammunition dumps and command centers. The primary objectives set for the operation were the runways and the air defense radars. The first strike. The final orders for the strikes were issued at 17:30 hours on Friday, 3rd of December 1971. The first formations were in flight and heading for the targets by 17:40 hours. Officially, it was announced via government channels that the airstrikes were launched in response to attacks along the western border on Pakistan Rangers outposts by regular troops of the Indian Army, which the Indian Air Force was providing support to. The Indians would later deny any engagement on the Western Front. However, the Indian air defense radar failed to detect the approaching formations. The first indication for the Indians of the impending assault was the roar of the strike aircraft over the airfields, while at Delhi, the air raid sirens were the first indications for newsmen gathered for the daily brief of the East Pakistan situation. But something was going on. The first of the strikes were mounted against the Pathankot Air Base, led by a flight of two Mirage 113s, a reconnaissance aircraft and a strike squad, a six-plane wing of F-86F Sabres flying from Murid and led by Wing Commander S.L. Gilani, hit the air base with unguided rockets and dropped 125 kg bombs. The main target of the strike was the runway, which was damaged and took the Indian ground crew several hours to repair. These missions were unopposed,
Since the Indian Air Force had not scrambled any interception and faced only anti-aircraft fire, Pathankot was covered by interceptors from Adhampur following the first strike, during the time it took the ground crew to repair its runway. At 17:45 hours, four Mirages flying from Sargodha and led by Wing Commander Hakimullah attacked Amritsar Air Base. Hakimullah's flight was armed with two 500 kg bombs each, with the strike used effectively, hitting the first 300 meters of the runway and cratering it enough to leave it non-operational for several hours. However, the Amritsar runway was repaired within the same night to receive detachments of MiG-21 and Su-7 that flew against Rafiki Air Base the next morning. A second strike of two F-100 four-star fighters, led by Wing Commander Amjad H. Khan, hit the P-35 radar station at Amritsar, rendering it inoperable for nearly an hour. Two Sukhoi then took off from the one remaining serviceable lane of the runway moments before it was bombed by passing B-57 Canberra. Within 45 minutes of these strikes, Pakistani troops had shelled India's western border frontier and were reported to have crossed the border at Poonch in the state of Jammu. Follow-up counter-air strikes. The third wave of the Pakistani Air Force counter-air strikes were directed to strike Ambala, Agra and Halwara around 1800 hours and continued in single or two plane formations through the evening until at least 22:30 hours. These strikes involved 15 B-57 Canberras, 4 T-33s and 1 C-130. The B-57 flew 7 single-plane sorties. These caused significant damage, especially in Uttaraj and Halwara, and impeded Indian Air Force preparation for retaliation. Ambala Air Base was hit by a two-plane B-57 formation led by Wing Commander Rais Rafi. The flight hit the runway with 8 bombs, causing minor damage. Like Ambala, Agra Air Base, which lay deepest among the Pakistani Air Force's targets that evening, was struck by a two-plane B-57 formation led by Wing Commander Yunus and followed by Flight Lieutenant Mazhar Bukhari. The bombs dropped by Yunus did not explode. Rais Rafi explained the old age of the bombs was the reason for their ineffectiveness, as these were supposed to be used in the Second World War. The first Indian counter-strikes launched that very night included the Canberras of the No. 5 Squadron based at Agra. Sirsa was hit by Squadron Leader Alvi with bombs equipped with time-delayed fuses, damaging the runway heavily and forcing the runway to be closed for the rest of the night. 4 T-33s from A Flight Number 2 Squadron, led by Squadron Leader Qureshi, hit Uttaral, causing damage to the runway. These were launched at the same time as the second strike over Srinagar. Uttaral was attacked a second time later that night by Wing Commander Akhtar. The net damage to the runway was significant enough to keep the runway closed for 6 days and for the taxiway to be used instead. In the south, Squadron Leader Ishtaq Qureshi's bombs hit the underground power cable at Jaisalmer, cutting off the power supply and telephone connection for 6 hours. At the same time, Jodhpur was hit by two B-57s led by Squadron Leader Sohail Mansoor, while Jamnagar was hit by Flight Lieutenant Ijaz Azam. एक में दादा, हाँ सर, तो हमारे रडार वाले क्या कर रहे थे? मतलब उस समय हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम था ही नहीं कुछ। अरे दादा, अगर तक आ गए थे तो दिल्ली के ऊपर भी मार देते वो लोग तो। दादा मैं बताता हूँ क्या हो रहा है यहाँ। ठीक है, यहाँ पे इंडियन काउंटर अटैक दिखाया जा रहा है, उसमें भी ये पाकिस्तान को जिताया दे रहे हैं कि इंडिया ने कोई काउंटर अटैक किया ही नहीं। ठीक है, फिर इंडिया जीता कैसे, ये पेपर्स पे पाकिस्तान को आज भी जिताना चाहते हैं। ये है कहानी इसकी पूरी।
जैसे वो मुगल मारे जा रहे थे, हम मरे जा रहे थे ना, सेम यहाँ भी चल रहा है। Aftermath of the airstrikes, East Pakistan air operations, the sea also. Following Pakistani preemptive air raids, the Indian government declared a state of emergency. In an address to her nation on radio, the then Indian Prime Minister Indira Gandhi stated, the Pakistani war against Bangladesh has become Come on. on against their homeland, and India must be prepared for a period of hardship and sacrifice. Statements released by both nations the next day confirmed the existence of a state of war between the two countries, although neither government formally issued a declaration of war. As Indian Prime Minister Indira Gandhi addressed the nation on radio shortly after midnight informing about the Pakistani attack, the Indian Air Force began retaliating. The Indian Air Force's fleet of Canberra bombers have been fully loaded with bombs and made ready for their deep forays over Pakistan. The Indian Air Force executed a total 23 combat sorties, sending Canberra from number 35 Squadron based in Pune, number 106 Squadron as well as number 5 and number 16 Squadrons to attack Murid, Miawali, Miawal, Sargodha, Chandar, Risalewala, Shorkot, Rafikul, and Masrur. The outcomes of these strikes are mostly unknown except that runways at Sargodha and Masrur were cratered, forcing Pakistani Air Force units stationed there to operate from taxiways for the next 2 days. Despite most of the Indian Air Force's bombers ingressing at a very low level, several Canberras were intercepted by the Pakistani Air Force's Mirages and some Indian bombers had to take evasive action. Most of these engagements occurred near the Indo-Pakistani border as the Canberras were climbing during egress. Most of the bombers made it out unscathed. One Canberra D-1 Mark 58 from JBCU Indian Air Force flown by Flight Lieutenant M. Sassoon and R.M. Advani was shot down by squadron leader M. Athar using a Matra R-530 air-to-air missile at a higher level. On the eastern front, in present-day Bangladesh, the Indian Air Force also struck the East Pakistani airfields of Pejgaon and later Kumit Tola. At the same time, the Indian Air Force was deploying additional aircraft to its forward airfields for the strikes that were to follow the next morning. Within days, India was able to achieve air superiority over the eastern front. The Second Corps offensive into Punjab. Under Genghis Khan, Pakistan's Second Corps offensive plan involved driving east from the vicinity of Bahalnagar to cross the international border and push towards Bhatinda and Ludhiana in India's Foxtrot sector or F sector. While describing the situation in the F sector of India, John H. Gill writes, with poor disposition and inept leadership, India's 67th Brigade lost a significant parcel of land to Pakistan's 105th Brigade despite repeated and costly counterattacks. Fortunately for India, indecision on the part of the Pakistan's High Command kept its potentially powerful Second Corps from executing a planned offensive against India's Foxtrot sector, or simply F sector. The Second Corps offensive plan called for the 105th Brigade and 25th Brigade to come under the Second Corps, while 4th Corps advanced from its position along the Ravi. The Pakistan Air Force also positioned mobile radar and three stock forward airfields in the proposed battle area to support the planned attack. Army headquarters ordered Second Corps to shift to its forward assembly areas on 14th of December, and major elements of the 1st Armored Division began to move the following day, while the 7th Division was also concentrating south of the Satluj. However, by now, a major part of the Second Corps 33rd Division has been broken up to reinforce Pakistani units against Indian offensives elsewhere. Thus, the Second Corps offensive was deprived of approximately one-third of its striking power before it had even begun. On 16 December, Army headquarters issued new orders freezing all movements until further notice. Trains carrying equipment of the 1st Division were unloaded, and the Second Corps, with its unit
on both sides of the settled in to await orders. If the operation had proceeded as planned, the force would likely have launched the attack in the early morning of December 17. However, due to the freeze order, they remained on the Pakistani side of the border and were unable to to cross before. cross before the ceasefire came into effect at 2000 hours. 20.00 hours on the same day. Pakistan's failure to launch the offensive in a timely manner has generated great controversy amongst subsequent commentators. Analysis: the Pakistani aircraft dropped a total number of 183 bombs, with 120 reportedly hitting 12 runways. However, this was a minor effort carried out on a narrow front and without depth, and was not a sustained offensive unit until the entire enemy strike force was eliminated. As a result, the achievements were minimal. Sir, एक second. Thus, of its stated objective, the PF was unable to neutralize the Indian force in the west, which on its part had dispersed its aircraft in hardened aircraft shelter, suffering only major damage to a few aircraft. News magazine. Coming, sir, coming. The Pakistani aircraft dropped. Trying to catch the Indian Air Force napping, Yahya Khan launched a Pakistani version of Israel's 1967 air blitz in hopes that one rapid attack would cripple India's far superior air power. But India was alert. Pakistani plots were inept, and Yahya's strategy of scattering his thin air force over a dozen airfields was a bust. Most sources attribute Pakistan's failure to launch the second Corps offensive to confusion and indecisiveness within the Pakistani High Command. ये था ऑपरेशन चंगेज खान. दादा Now, let us ये come आप back. देखो, हाँ, लगातार एयरफोर्स जो है पाकिस्तान की इंडिया के ऊपर अटैक करे जा रही थी, लेकिन इंडियन एयरफोर्स कुछ नहीं कर पा रही थी. ठीक है, फिर हारे कैसे? ये जो है प्लेन्स को सबमरीन बनाना चाहते थे. ठीक है, जमीन के अंदर से इंडिया को कोर क्रस्ट से लेके मेटल तक पूरा खोखला कर देना चाहते थे, ताकि इंडिया जो है पूरा धस जाए अंदर. और इंडिया धस गया. आज जो है आर्टिफिशियल इंडिया ऊपर है. ये आर्टिकल ये कहना चाह रहा है. ये तो इन लोग मतलब जो आप बोल रहे थे पहले ना, वही चीज इन लोग दिखाना चाह रहा है कि भाई इंडिया अनप्रिपेयर्ड था. और बहुत अभी देखो मतलब दादा, अभी मैं हाँ दिखाता हूँ इन्होंने चेंज कब करा है. जो मैंने अभी दिखाया था ना आपको कैश ये कॉपी, हाँ 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 जी, चेंज हाँ कब करा है आप देखो. ये जी. जस्ट 24 घंटे पहले. अच्छा, हाँ, it is अभी आपको डेट estimated. भी दिखाऊंगा. It is estimated that members of the Pakistani military are supporting pro-Pakistani Islamist militias killed wait, between wait, 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 wait. ये क्या कह रहा है? एकदम. दादा ये देखो डेट कब चेंज करा इन्होंने. हाँ हाँ 19 अप्रैल 2023 16:35 हाँ 4:35. हाँ. 24 घंटे पहले इन्होंने पूरी तरह चेंज कर दिया इसको. मतलब इन लोग लगे हुए हैं अपना नैरेटिव से. हाँ, अभी आपको अलग डेट भी ये देखो मैं दिखा रहा हूँ. ये हाँ हाँ, देखिए आप डेट है. दिखाए तो आपको दिखाए वहीं से पढ़ा मैं टाइम में. अभी आप जैसे दिखाए वो टाइम देखा मैं 4 बजे 4:35 पर. ठीक है दादा, आपके पीछे पड़े हो. उनको लेकिन नेटिव दादा को तोड़ना होगा. आप जो है वो करने वाले थे ना क्या चीज सर? 1971 वॉर का, तो इन्होंने 4 बजे कल चेंज कर दिया. नहीं, बात सही है. नहीं, उनको हमारे तो को बेसिक को करने का, वो कितना भी करते रहे, उसे क्या फर्क पड़ता है यार. हाँ, नहीं मगर मैं ये दिखा रहा आउटकम हूँ तो कि चेंज नहीं होना. हाँ, नैरेटिव उनका पब्लिक को अपना जो है जिस खिलाना दिन है जिस ना. दिन वो विकीपीडिया में लिख देंगे कि पाकिस्तान जीत गया, उस दिन हम बोलेंगे हाँ भाई ठीक है, चलो तुमने अच्छा कर दिया. इसमें क्या? द फैक्ट रिमेन्स दैट इसमें. बांग्लादेश वाज बॉर्न ना. वो कुछ भी करते रहे. हाँ, क्या बोल रहा है? इट इज ये तो है. एस्टिमेटेड दैट पाकिस्तानी मिलिट्री एंड सपोर्टिंग प्रो पाकिस्तानी इस्लामी किल्ड 30 लाख से कल था ना जो है. रिजल्ट द कॉन्फ्लिक्ट फर्दर
8 to 10 million people fled the country to seek refuge in India. During 1971 Bangladesh War of Independence, members of the Pakistan military supporting pro-Pakistani Islamist militia called the Rajakar raped between so and so. ये कल पढ़ लिया था हम लोगों ने. जी सर. इसके बाद क्या बोल रहा है ये तो पुरानी बातें कर रहा है. कैसे ये जगह पढ़ लीजिए. Approximately 93,000 Pakistani servicemen were taken prisoner by the Indian Army, which included 79,676 to 81,000 uniformed personnel of the Pakistani armed forces, including some Bengali soldiers who had remained loyal to Pakistan. The remaining 10,324 to 12,500 prisoners were civilians, either family members of the military personnel or collaborators, that is Razakar. दादा ये क्या बता रहा है, 79,000 से 81,000 अनइन्फॉर्म्ड पर्सनल थे. हाँ, अनयूनिफॉर्म. मतलब इनकी आर्मी नहीं थी वहां पे वॉर करने के वक्त, बाकी सब कोई था, बस लुंगी आर्मी ही नहीं पहने थी. हाँ, लुंगी पहने हुए थे. ये वही जैसे अरे पुराना वीडियो देखिएगा ना, वो लोग राइफल अपना जमीन पे रख रहा है, उसमें तो पूरा लंबा एकदम दिख रहा है बहुत दूर तक. एक है पुराना अरे वीडियो. दादा ये तो ये बता देंगे वो राइफल भी नहीं है, दातून कर रहे थे, वो दातून रख दिए उन्होंने. मतलब कितना हम लोगों ने कितना लोग खिलाया पिलाया जिनेवा कन्वेंशन के अनुसार. हमारे अब दादा खिलाया पिलाया तो ठीक है, अपने प्रिजनर ऑफ वॉर नहीं दिए इन्होंने वापस. सबसे बड़ा ब्लंडर, टेरिटरी भी वापस करी, उनके प्रिजनर्स ऑफ वॉर भी वापस करे. 93,000 अपने 904 नहीं लिए. अच्छा, दोनों तरफ का मैं बता रहा हूँ. ये बीएसएफ वाले यदि गलती से भी उधर भटक जाते हैं ना, तो बॉर्डर फोर्स और बांग्लादेश का ना बीडीआर, हम लोग आँख वाँख निकाल लेते हैं. दो से ऐसा घटना हुआ है. अच्छा, ये गए पाकिस्तान का भी वही काम है, पकड़ने से लोग जो है कुछ भी कर सकते हैं. इसका मेजर कालिया की कौन था ना, ये भी आर्टिकल ऐसे ही लिखे जा रहा है जैसे अभी इस टाइम में आपको वॉर दिख रही होगी यूक्रेन और इसकी रशिया की. ठीक है, रशियन आर्मी के 50 जवान मारे गए और उन्होंने रशियन आर्मी ने रिटेलिएट किया तो 4 जो है सिविलियन मर गए. ठीक है, उनकी आर्मी का एक भी आदमी नहीं मरा, यूक्रेन की रशियन आर्मी मर रही है, और जब रिटेलिएट कर रही है तो जो है सिविलियन मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, बुढ़े मर. ना आप मानोगे ना मैं मानूंगा, हम लोग तो कुछ तो समझते हैं. अच्छा, अभी आवाज ठीक आ रही है ना? हाँ थोड़ा कम है लेकिन आ रही है ठीक. कम है तो मतलब माइक चेंज करना पड़ेगा. हाँ आप या तो हेडफोन दूसरा ले लो कोई है. अरे तो एक नया लिया है, उसमें भी ये प्रॉब्लम आ रहा है. मुझे लग रहा है कंप्यूटर में कोई दिक्कत आई. इसमें दादा एक चीज मिसिंग है, पता है क्या? इन्होंने वहां पे ये यूज करे थे, क्या नाम है, जो टेररिस्ट ग्रुप्स होते हैं ना इनके, हाँ हाँ, ये यूज करे थे. मैंने विकिपीडिया में बहुत पहले पढ़ा था, आज से करीबन 4 साल पहले. तो हटा दिया होगा अभी. हाँ बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप्स जो है उसमें यूज हुए थे. हाँ, चेचनिया वाले थे और कहाँ कहाँ के, मतलब बाहर से भी लोग आए हुए. दादा पढ़ो ना इसको. हाँ पढ़ता हूँ सर. द इंडो-पाकिस्तानी वॉर ऑफ 1971. यहाँ से कहाँ से सर? ये क्या हुआ, क्या है? नहीं दिखाई दे रहा, कहाँ है? नहीं, ये दूसरा आर्टिकल है सर. ये दूसरा दादा आप आर्टिकल है. अपना वाला लगाओ, अपना वाला लगाओ, मैं ये हटा रहा हूँ. आ गया? हाँ जी. The Indian government repeatedly appealed to the international community for assistance, but failed to elicit any response, despite the External Affairs Minister, Foreign meeting foreign ministers of other countries.
Prime Minister Indira Gandhi on 27th of March 1971 concluded that instead of taking in millions of refugees, it was still economical to go to war against Pakistan, and expressed full support of our government for the independence struggle of the people of East Pakistan. On 20th of April 1971, the Union Cabinet ordered the Chief of the Army Staff, General Sam Manekshaw, to go into East Pakistan. Defected East Pakistan military officers and the elements of Indian Research and Analysis Wing immediately started using the Indian refugee camps for recruitment and training of Mukti Vahini guerrillas that were to be trained against Pakistan. Indian authorities also attempted to carry on psychological warfare and keep up the morale of comrades in East Pakistan. हाँ भैया, सर आवाज आ रही है, किसका? पता नहीं, हाँ बंद गई। वो On 20th of April 1971, the Union Cabinet ordered the Chief of Army Staff, General Sam Manekshaw, to go into East Pakistan. Defected East Pakistani military officers and the elements of Indian Research and Analysis Wing immediately started using the Indian refugee camps for recruitment and training of Mukti Vahini guerrillas that were to be trained against Pakistan. Indian authorities also attempted to carry on psychological warfare and keep up the morale of comrades in East Pakistan. The Swadhin Bangla Bekar Kendra, Free Bangladesh Radio Center, which had broadcast Major Rahman's independence declaration, was relocated from Kalurghat in East Pakistan to India after the transmission building was shelled by Pakistani Sabre jets on 30th of March 1971. It resumed broadcasts from 3rd of April from Tripura, aided by the Indian Border Security Force. The clandestine station was finally shifted to Kolkata, where it was joined by a large number of Bangladeshi radio programmers, newscasters, poets, singers, and journalists. Its jurisdiction was transferred to the Provisional Bangladesh Government in exile and made its first broadcast on 25th of May, the birth anniversary of poet Qazi Nazrul Islam, who would later be named Bangladesh's national poet. Among the Indian contributors to the radio station's nationalistic programs were Salil Chaudhary. Akashvani Kolkata also actively took part in this effort. India's official engagement with Pakistan. At the end of April 1971, Prime Minister Indira Gandhi had asked the Indian Army Chief, General Sam Manekshaw, if he was ready to go to war with Pakistan. According to Manekshaw's own personal account, he refused, citing the onset of monsoon season in East Pakistan and also the fact that the army tanks were being refitted. He offered his resignation, which Gandhi declined. He said एक he मिनट एक could मिनट guarantee. हाँ क्या जी, बोला था? बेबी, आई हाँ नो बोल, what is war. You know politics, I know war. I will defend my personals. I will not go into the war because it is rainy season. ये बोला था वो. जी, 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 जी. He then said that he could guarantee victory if he would allow him to prepare for the conflict on his terms and set a date for it. Gandhi accepted his conditions. In reality, Gandhi was well aware of the difficulties of a hasty military action, but she needed to get the military's views to satisfy her hawkish colleagues and the public opinion, which were critical of India's restraint. The news media's mood in East Pakistan had also turned increasingly jingoistic and militaristic against East Pakistan and India. When the Pakistani news media reported the complexity of the situation in the East, though the reactions from the Pakistan news media pundits were mixed. By the end of September 1971, a propaganda campaign, possibly orchestrated by elements within the government of Pakistan, resulted in stickers endorsing "Crush India" becoming a standard feature on the rear windows of vehicles in Rawalpindi, Islamabad, and Lahore.
This soon spread to the rest of West Pakistan. By October, other speakers proclaimed "Hang the traitor" in an apparent reference to Sheikh Mujibur Rahman. By the first week of December, the conservative print media outlets in the country had published jihad-related materials to boost the recruitment in the military. By November 1971, an Indian-Pakistani war seemed inevitable. The Soviet Union reportedly warned Pakistan against the war, which they termed "suicidal course for Pakistan's unity." Despite this warning, in November 1971, thousands of people led by conservative Pakistani politicians marched in Lahore and across Pakistan, calling for Pakistan to crush India. India responded by starting a massive build-up of the Indian Army on the western borders. The army waited until December, when the drier ground in the east made for easier operations, and the Himalayan passes were closed by snow, preventing any Chinese intervention. On 23rd of November, President Yahya Khan declared a national state of emergency and told the country to prepare for war. On the evening of Dada, 3rd December, yes, sir. Dada, Yes, sir. and the Himalayan passes were closed by snow, preventing any Chinese intervention. This is very important. Yes, sir. December Otherwise, they was would have. chosen for this purpose only because China would have come ना अगर हाँ, हाँ, नॉर्मली हाँ, हाँ, बर्फ नहीं होती थी वहां पर. हाँ जी. Exactly, sir. On the evening of 3rd of December, at about 1740, the Pakistani Air Force launched surprise preemptive strikes on 11 airfields in northwestern India, including Agra, which was 480 kilometers from the border. At the time of the attack, the Taj Mahal had been camouflaged with lots of twigs and leaves and draped with burlap. Burlap is gunny sack material because of its marble glowed like a white beacon in the moonlight. The attacks carried out by Pakistan were inspired by Israeli air attacks during Yom Kippur War, which saw Israel gaining aerial superiority over Arab states. However, the attacks carried out by Pakistan left minimal damages to Indian aerospace. Originally, the purpose of Pakistan was to paralyze Indian Air Force in the west, so Pakistan could advance into western India. However, lack of fighter planes deployed during the operations were low as compared to the ones by Israel during the Yom Kippur War, which saw massive amounts of planes deployed. These preemptive strikes, known as Operation Genghis Khan, are inspired by the success of Israel's Operation Focus in the Arab-Israeli Six-Day War. Unlike the Israeli attack on Arab air bases in 1967, which involved a large number of Israeli planes, Pakistan flew no more than 50 planes to India. In an address to the nation on radio that same evening, Prime Minister Indira Gandhi held that the airstrikes were a declaration of war against India, and the Indian Air Force responded with initial airstrikes the same night. These expanded to massive retaliatory strikes the next morning. This air action marked the start of an all-out war. Gandhi ordered the mobilization of troops and launched a full-scale invasion of East Pakistan. This involved air forces in coordinated air, sea and land assaults. The main Indian objective on the eastern front was to capture Dhaka, and on the western front to contain Pakistani forces. Naval hostilities and engagement. Na- Naval headquarters staffers and commanders of the Pakistani Navy knew very well that unlike the 1965 war, the Navy was ill prepared for the naval conflict with India. The Pakistani Navy was in no condition of fighting an offensive war in deep sea against the Indian Navy, and neither was it in a condition to mount serious defense against the Indian Navy's seaborne encroachment. In the western theatre of the war, the Indian Navy's Western Naval Command under Vice Admiral S. M. Kohli successfully launched a surprise attack at Karachi Fort on the night of 4th to 5th December 1971 under the code name Trident. The naval attack involving the Soviet-built Osa missile boats sank the Pakistani Navy's destroyer PNS Khyber and minesweeper PNS Muhafiz, while PNS Shah Jahan was also badly damaged. Pakistani naval sources reported that about 720 Pakistani sailors were killed or wounded,
and Pakistan lost reserve fuel and many commercial ships, thus crippling the Pakistani Navy's further involvement in the conflict. In retaliation, the Pakistani Navy submarines Angor, Mangro, and Kushuk began their operations to seek out the major Indian warships. On 9th of December 1971, Angor sank INS Kukri, inflicting 194 Indian casualties, and this attack was the first submarine kill since World War II. टुकड़ी को डुबा दिया था इन लोगों ने. The sinking of INS Kukri was followed by another Indian attack on Karachi port on the night of 8th to 9th of December 1971 under the code name Python. A squadron of Indian Navy Rosa missile boats approached the Karachi port and launched a series of Soviet-acquired Styx missiles. That resulted in further destruction of reserve fuel tanks and the sinking of 3 Pakistani merchant ships as well as foreign ships docked in Karachi. The Pakistani Air Force did not attack the Indian Navy ships, and confusion remained the next day when the civilian pilot of Pakistan International, acting as reconnaissance war pilot, misidentified PNS Zulfikar, and the Air Force attacked its own warship. Inflicting major damages and killing several officers on board. In the eastern theatre of the war, the Indian Eastern Naval Command under Vice Admiral Neelkanta Krishnan completely isolated East Pakistan by a naval blockade in the Bay of Bengal, trapping the Eastern Pakistan Navy and 8 foreign merchant ships in the ports. From 4th of December onwards, the aircraft carrier INS Vikrant was deployed, and its Seahawk fighter bombers attacked many coastal towns in East Pakistan, including Chittagong and Cox's Bazar. Pakistan countered the threat by sending the submarine PNS Ghazi, which sank off Visakhapatnam's coast due to an internal explosion, though whether this was triggered by Indian depth charges, diving to avoid them, or some other reason has never been established. पढ़ना है इसके बारे में. ठीक है, इसमें तो और ऑपरेशंस का ही बताया गया. Due to high number of defections. PNS गाजी को आज भी ये गाजी ही समझ रहे हैं कि आज भी गाजी का ही टाइम है. उसे बचाने में लगे, वो नहीं अपनी वजह से डूब गई, अंदर फूट गया कुछ. ये लेफ्टिस्ट यही काम करते, ये सारी जो है लड़ाइयाँ पेपर पे ही जीतते हैं. PNS Ghazi. गाजी क्या डुबाई, इन्होंने जो है अमेरिका की उस टाइम इज्जत भी डुबो दी. Starting as the only submarine in the Indo-Pakistani War of 1965, Ghazi remained the Pakistan Navy's flagship submarine until she sank under mysterious circumstances near India's eastern coast while conducting naval operations en route to the Bay of Bengal. While the Indian Navy credits Ghazi's sinking to its destroyer INS Rajput, the Pakistani military oversight and reviews stated that the submarine sank due to either an internal explosion or accidental detonation of mines being laid by the submarine of the Visakhapatnam harbour. दादा इनको चलानी नहीं आती थी तो ली क्यों थी इन्होंने? अरे नहीं यार, वो बकवास कर रहे हैं. INS राजपूत ने उसको डुबाया था, सीधी बात. मुझे मालूम है, मगर मैं कह रहा हूँ अगर चलानी नहीं आती तो भोसड़ी वालों लेते काहे को? कागज की नाव बना के चलाया करो ना, इतनी ही औकात है इनकी. ये विक्रांत को डुबाने के लिए आई थी, मालूम है? हाँ. इनका प्लान वही था, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाया. पढ़ो.
under the command Eastern Front of Indo-Pakistani War of 1971. Under the command of Lieutenant Commander Yusuf Raza, Ghazi returned to Karachi coast after successfully completing the submerged circumnavigation of Africa, which was taken in order to undergo a refitting program and mid-life updates of a military computer on 2nd of April 1970. In August 71, the Indian Navy transferred INS Vikrant, its aircraft carrier, to the Eastern Naval Command in Visakhapatnam, which forced the Pakistani Navy to adjust its submarine operations. Before 1971, there were several proposals made to the Ayub administration to strengthen the naval defense of East Pakistan, but, but none were made feasible, and the Navy was in no position to mount a defense against approaching Indian naval advances. After the defection of Pakistan Navy's Bengali officers and sailors to India, the Eastern Command Pakistan was under intense pressure to counter the insurgency and the advance of the Indian Army towards East Pakistan on three fronts. The Yahya administration insisted the Navy attempt to reinforce the naval defense of the East, while the Navy and headquarters objected to the idea of deploying Ghazi in the total absence of a seaport, straying away from their original plan. Many senior commanders had felt that the deployment of Ghazi was highly dangerous and impossible to achieve by sending the obsolete submarine behind enemy lines. The obsolete submarine behind enemy lines. But deployment came when it became apparent that war was inevitable. Prior to her deployment, Ghazi continued to experience equipment failures and reportedly had aging issues. Since it was the only submarine of the Pakistan Navy and had the range and capability to undertake operations in distant waters controlled by India, Ghazi was pressed into operation to destroy or damage Vikrant. On 14th of November 1971, she quietly sailed 3,000 miles around the Indian peninsula from the Arabian Sea to the Bay of Bengal under the command of Zafar Muhammad, who commanded a submarine for the first time with 10 officers and 82 sailors. Ghazi was on a twofold mission. The primary goal was to locate and sink Vikrant, and the secondary was to mine India's eastern seaboard, which was to be fulfilled irrespective of the accomplishment of the first. Another problem faced by PNS Ghazi was the poor conditions of maintenance facilities at Chittagong Port in East Pakistan. The mysterious sinking of Ghazi took place on 4th of December 1971 during its hunt to find Vikrant during the mine-laying mission on the Visakhapatnam port in the Bay of Bengal. The cause of the sinking is still unknown, and Indian and Pakistani sources have different views. On 16th of November, the Ghazi was in contact with the Pakistani Navy headquarters, and Commander Khan charted the coordinates that reported that she was 400 kilometers off Bombay. On 19th of November, she was off to Sri Lanka and entered the Bay of Bengal on 20th of November 1971. Around this time, the top secret files were opened as instructed, and the hunt for Vikrant began on 23rd of November, and Ghazi was off to Madras, where she reportedly the Indian aircraft where reportedly the Indian aircraft carrier was stationed, but she was 10 days late, and the Vikrant was now actually somewhere near the Andaman Islands. Unable to detect her target, Ghazi's commanders became disillusioned about their hunt for Vikrant and turned back to Visakhapatnam to start laying mines off the harbour, with the confidence that would take a swipe at Vikrant, or at least bottle up the Indian Navy's heavy units clustered at this major Indian naval base on the 9th of 2nd to 3rd December 1971. On 1st of December 1971, Vice Admiral Nilkanth Krishnan briefed Captain Inder Singh, the commanding officer of INS Rajput, that a Pakistani submarine had been sighted off the Sri Lankan coast and was absolutely certain that the submarine would be somewhere around Madras or Visakhapatnam. He made it clear that once Rajput had completed refueling, she must leave the harbour with all navigational aids switched off. According to Indian claims at 23:40 hours on 3rd of December 1971, taking on board a pilot
Rajput moved to the channel with the exit from Visakhapatnam. At midnight, shortly after passing the entrance buoy, the starboard lookout reported a breaker on the surface of the water right on the nose. According to the Indian Navy's claims, Captain Singh changed the course at full speed across the specified point and ordered to drop two depth charges, which was done. The explosion was stunning, and Rajput suffered a serious material concussion to its structure. However, visible results of the attack are not given. Rajput for some time surveyed the area, dumping bombs. No longer found any contact, either visual or acoustic. A few minutes later, the destroyer continued her way to the coast of East Pakistan, now Bangladesh. On the night of 4th to 5th December 1971, Ravi sank with all 93 servicemen on board, 11 officers and 22 enlisted sailors under mysterious circumstances off the Visakhapatnam coast, allowing the Indian Navy to effect a naval blockade of East Pakistan. पता है, इसको दोबारा पढ़ो तो हाँ, ये कैप्टन सिंह चेंज द कोर्स फिर से पढ़ो. हाँ. At midnight, shortly after passing the entrance buoy, the starboard lookout reported a breaker on the surface of the water right on the nose. According to the Indian Navy's claims, Captain Singh Reported changed. a breaker हाँ हाँ हाँ. breaker on the surface of the water वो right क्या on the क्या nose. होता है इसमें क्या That होता है means सर? the Ghazi would have been somewhere there only. ऐसा कुछ चक्कर हाँ है. हाँ हाँ. नहीं नहीं, वो तो जाने से वो समुंदर के ऊपर जो है होता है. According to Indian Navy, Captain Singh changed the course at full speed. Full speed में turn मारा उसने. हाँ. Across the specified point and order to drop two depth charges. मतलब सबमरीन मारने के लिए. हाँ. which was सबमरीन को done. खत्म करने के लिए. Explosion were stunning, and Rajput suffered a serious material concussion to its structure. However, viable result of this attack are not given. Rajput for some time surveyed the area, dumping bombs. No longer found any contact, either visual or acoustic. A few minutes later, the destroyer continued, and so Ghazi sank. अब ये क्या बोल रहा है? Intelligence deception. According to Indian DNI's director, Rear Admiral Mihir K. Roy, Ghazi's existence was revealed when a signal addressed to the naval authorities in Chittagong was intercepted, requesting information on a lubrication oil only used by submarines and minesweepers. Indian Navy intelligence tracked Ghazi with a code name issued as Khalid Devi, and the Indian Navy began to realize that the Pakistanis would inevitably be forced to send their submarine Ghazi to the Bay of Bengal as the sole ship which could operate in these waters. Vice Admiral Nilkant Krishnan of the Eastern Naval Command had maintained that it was clear that Pakistan would have deployed Ghazi in the Bay of Bengal, and a part of its plan was an attempt to sink the Indian aircraft carrier Vikram. At the same time, concerted action was taken to disseminate misinformation designed to mislead the enemy about the true location of the aircraft carrier and to foster confidence that the carrier was stationed at Visakhapatnam. In particular, the D-41 Rajput was instructed to move from Visakhapatnam to Madras, sending signals as if it were the Vikram. All these activities were apparently successful in deceiving Ghazi when on 25th of November 1971, the Navy headquarters of Pakistan communicated with Ghazi that stated, "Intel indicates carrier in port." राजपूत को वो लोग विक्रांत समझ रहे थे. विक्रांत का बता दिया. सिग्नल वैसे दिया ना. Aftermath. On the 26th of November 1971, Ghazi was expected to communicate with the Pakistani naval headquarters to submit its mission report, but did not communicate with its base. The Pakistani naval headquarters repeatedly made frantic efforts to establish the communication, and anxiety grew as base asked for a return to the base. Before the naval hostilities broke out, commanding officers have started
had started worrying about Ghazi's fate, but the Pakistani Naval Headquarters Senior Command had replied to the junior officers that several reasons could be attributed to the failure of the submarine to communicate. On 9th of December, the Indian Navy issued a statement about the fate of Ghazi. The first indication of Ghazi's fate came when a message from the Indian Naval Headquarters claiming sinking of Ghazi on the night of 3rd December was intercepted. The Indian Naval Headquarters also issued a statement a few hours before the loss of INS Kukri and prior to the launch of a second missile attack on Karachi port. ये है सर। कौन कौन है भाई? बाजवा साहब आ गए क्या? अरे वाह, हाँ आ गए। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार जी, नमस्कार, क्या हाल है? बस ठीक है बस सर। बहुत बिजी हैं लगता है आप आजकल। और दिन के टाइम होता है ना, 9 से 5 काम करना होता है, अभी 1:30 बजे। हाँ वही। तो कैसा बाकी लग चल रहा है रहा है हमारा अच्छा। कवरेज सर? अच्छा टॉपिक। हाँ, ये INS राजपूत को जनरली उन्होंने बनाया था कि फॉल्स रेडियो सिग्नल भेजो कि ये प्रिटेंड करे कि हम विक्रांत हैं। हाँ जी। INS राजपूत को डिकमीशन करने वाले थे। वो तो उसको बेचारा एग्जाम खड़ा था जगह वहां पर रिपेयरिंग के लिए, वहां से निकाल के बाहर किया उसको कि तू ही निकल जा भाई, तू ही बच जा माइनस विक्रांत। राइट, अच्छे टैक्टिक्स थे इनके। 65 की लड़ाई में पाकिस्तान नेवी बेटर थी आई थिंक। नहीं, कुछ पता नहीं। इंडिया ने कराची को ब्लॉकेट किया था। अगर ऑपरेशन पराक्रम के दौरान भी अगर कराची को ब्लॉकेट किया जाता तो मच बेटर होता, मुझे लगता है। जी जी। पता ये पढ़ो तो डैमेज इन्फ्लिक्टेड ऑन द पाकिस्तानी वाला, ये The पढ़ो। damage inflicted on the Pakistan Navy stood at 7 gunboats, 1 minesweeper, 1 submarine, 2 destroyers, 3 patrol crafts belonging to the Pakistan Coast Guard, 18 cargo, supply and communication vessels, and a large damage inflicted on the naval base and docks in the coastal town of Karachi. 3 merchant navy ships, Anwar Baksh, Pasni, and Madhumati, and 10 smaller vessels were captured. Around 1,900 personnel were lost, while 1,413 servicemen were captured by Indian forces in Dhaka. According to one Pakistani scholar, Tariq Ali, Pakistan lost half its navy in the war. As the Indian Army tightened its grip in East Pakistan, the Indian Air Force continued with its attacks against Pakistan as the campaign developed into a series of daylight, anti-airfield, anti-radar, and close support attacks by fighter jets, with night attacks against airfields and strategic targets by Canberras and Ainsworth, while Pakistan responded with similar night attack with its P-57 and C-130. while Pakistan responded with similar night attacks, which is B-57 and C-130s. The Pakistani Air Force deployed its F-6s mainly. सर बाजवा सर के यहाँ से आवाज आ रहा है। नहीं, सॉरी, अभी म्यूट। नहीं कोई बात नहीं। Ground operations. Before the start of the war, the Indian Army was well organized on both fronts and enjoyed significant numerical superiority over the Pakistan Army. The Indian Army's extraordinary war performance at both fronts restored the prestige, confidence, and dignity that it had lost during the Sino-Indian War in 1962. When the conflict started, the war immediately took a decisive turn in favor of India and the Bengali rebel allies.
Militarily and diplomatically, on both fronts, Pakistan launched several ground offensives, but the Indian Army held its ground and initiated well-coordinated ground operations on both fronts. Major ground attacks were concentrated on the western border by the Pakistan Army, fighting together with the Pakistan Marines in the southern border, but the Indian Army was successful in penetrating into Pakistani soil. It eventually made some quick and initial gains, including the capture of around 15,010 square kilometers of Pakistani territory. This land gained by India in Azad Kashmir, Punjab and Sindh sectors was later ceded in the Shimla Agreement of 1972 as a gesture of goodwill. Casualties inflicted to हिरणमय Pakistan हिरणमय सुन रहे क्या? नहीं. Casualties inflicted to Pakistan Army's number 1 Corps, number 2 Corps and Pakistan Marine Punjab detachment were very high, and many soldiers and marines perished due to lack of operational planning and lack of coordination. कहाँ चला गया? छोड़ दो उसको रहने दो. Lieutenant General Jagjit Singh Arora, the General Officer Commanding in Chief of the Indian Army's Eastern Command, led the full Indian thrust into East Pakistan. As the Indian Eastern Command attacked the Pakistan Eastern Command, the Indian Air Force rapidly destroyed the small air contingent in East Pakistan and put the Dhaka airfield out of commission. Hiranmai ji band कीजिए. In the meantime, the Indian Army effectively blockaded East Pakistan. The Indian campaign's blitzkrieg techniques exploited weaknesses in the Pakistani positions and bypassed opposition. This resulted in swift victory. Faced with insurmountable losses, the Pakistani military capitulated in less than a fortnight, and psychological panic spread in the Eastern Command's military leadership. Subsequently, the Indian Army encircled Dhaka and issued an ultimatum to surrender in 30 minutes time window on 16th of December 1971. Upon hearing the ultimatum, the East Pakistan government collapsed when Lieutenant General A.K. Niazi, commander of the Eastern Command, and his deputy, Vice Admiral M.S. Khan, surrendered without offering any resistance. On 16th of December 1971, Pakistan ultimately called for unilateral ceasefire and surrendered its entire four-tier military to the Indian Army, hence ending the Indo-Pakistani War of 1971. On the ground, Pakistan suffered the most, with 8,000 killed and 25,000 wounded, while India only had 3,000 dead and 12,000 wounded. The loss of armored vehicles was similarly imbalanced, and this finally represented a major defeat for Pakistan. Surrender of Pakistan Eastern Command in East Pakistan. Officially, the instrument of Just minute. hostilities officially ended at 14:30 GMT on 17th of December after the surrender on 16th of December, and India claimed large parts of territory in Pakistan, although pre-war boundaries were recognized after the war. The war confirmed the independence of Bangladesh. Following the surrender, the Indian Army took approximately 90,000 Pakistani servicemen and their Bengali supporters as POWs, making it the largest surrender since World War II. Initial counts recorded that approximately 79,676 war prisoners were uniformed personnel, and the overwhelming majority of the war prisoners were officers, most of them from the Army and the Navy, while relatively small numbers were from the Air Force and the Marines. Other and large numbers were serving in paramilitary units. The remaining prisoners were civilians who were either family members of the military personnel or collaborators or razakars. The Hamodur Rahman Commission and the POW Investigation Commission reports instituted by Pakistan lists the Pakistani POWs as given in the table below. Apart from soldiers, it was estimated that 15,000 Bengali civilians were also made prisoners of war. ये टेबल बता रहा है कौन सा ब्रांच का कितना आदमी पकड़ा है.
United States and the Soviet Union. The Soviet Union sympathized with the East Pakistanis and supported the Indian Army and Mukti Vahini's incursion against Pakistan during the war in a broader view of recognizing that secession of East Pakistan as independent Bangladesh would weaken the position of its rivals, the United States and China. The Soviet Union gave assurances to India that if a confrontation with the United States or China developed, it would take countermeasures. The assurance was enshrined in the Indo-Soviet Treaty of Friendship and Cooperation, signed in August 1971. The Soviet Union accepted the Indian position that any resolution to the crisis in East Pakistan would have to be on terms acceptable to India and the Awami League, but the Indo-Soviet Treaty did not mean a total commitment to Indian stance, according to Robert Jackson. The Soviet Union continued economic aid to Pakistan and made sympathetic gestures to Pakistan until mid-October 1971. By November 1971, the Soviet ambassador to Pakistan, Alexei Rodionov, directed a secretive Rodionov message, that ultimately warned Pakistan that it will be embarking on a suicidal course if it escalates tensions in the subcontinent. The United States stood with Pakistan by supporting it morally, politically, economically, and materially when US President Richard Nixon and his Secretary of State Henry Kissinger refused to use rhetoric in a hopeless attempt to intervene in a large civil war. The US establishment had the impression that the Soviets were in an informal alliance with India, and the US therefore needed Pakistan to help limit Soviet influence in South Asia. During the Cold War, Pakistan was a close former ally of the United States and also had close relations with the People's Republic of China, with whom Nixon had been negotiating a rapprochement and were intended to visit in February 1972. Nixon feared that an Indian invasion of Pakistan would mean total Soviet domination of the region, and it would seriously undermine the global position of the United States and the regional position of America's new tactical ally, China. Nixon encouraged Iran to send military supplies to Pakistan. The Nixon administration also ignored reports it received of the genocidal activities of the Pakistani military in East Pakistan, most notably the Flood Telegraph, and this prompted widespread criticism and condemnation, both by the United States Congress and in the international press. The then U.S. Ambassador in the United States, George H. W. Bush, introduced a resolution in the UN Security Council calling for a ceasefire and the withdrawal of armed forces by India and Pakistan. However, it was vetoed by the Soviet Union, and the following days witnessed the use of great pressure on the Soviets from the Nixon-Kissinger duo to get India to withdraw, but to no avail. When Pakistan's defeat in the eastern sector seemed certain, Nixon deployed Task Force 74, led by the aircraft carrier USS Enterprise, into the Bay of Bengal. Enterprise and its escort ships arrived on station on 11th of December 1971. According to a Russian documentary, the United Kingdom also deployed a carrier battle group led by the aircraft carrier HMS Eagle to the bay on her final deployment. UK भी भेजा. On 6th and 13th of December, the Soviet Navy dispatched two groups of cruisers and destroyers from Vladivostok. They trailed US Task Force 74 into the Indian Ocean from 18th of December 1971 until the 7th of January 1972. The Soviets also had a nuclear submarine to help ward off the threat posed by USS Enterprise task force on the Indian Ocean. As the war progressed, it became apparent to the United States that India was going to invade and disintegrate Pakistan in a matter of weeks. Therefore, President Nixon spoke with the USSR General Secretary Leonid Brezhnev on a hotline on 10th of December, where Nixon reportedly urged Brezhnev to restrain India, as he quoted, "in the strongest possible terms to restrain India, with which you have great influence and for whose actions you must share responsibility." After the war, the United States accepted
a new balance of power and recognized India as a dominant player in South Asia. The US immediately engaged in strengthening bilateral relations between the two countries in the successive years. The Soviet Union, while being sympathetic to Pakistan's loss, decided to engage with Pakistan after sending an invitation through Rodionov to Zulfikar Ali Bhutto, who paid a state visit to the Soviet Union in 1972 to strengthen bilateral relations that continued over the years. A 2019 study argues that Nixon and Kissinger routinely demonstrated psychological biases that led them to overestimate the likelihood of West Pakistani victory in the war, and they overestimated the importance of the crisis to broader US policy. The evidence fails to support Nixon and Kissinger's own framing of the 1971 crisis as a contest between cool-headed realpolitik and idealistic humanitarianism, and instead shows that Kissinger and Nixon's policy decisions harmed their stated goals because of repeated decision-making errors. During the course of the war, China harshly criticized India for its involvement in the East Pakistan crisis and accused India of having imperialistic छोड़ना रहने designs दे in इसको South Asia. नहीं नहीं The war stripped Pakistan of more than half of its population and nearly one-third of its army in captivity. It clearly established India's military and political dominance of the subcontinent. India successfully led a diplomatic campaign to isolate Pakistan. In addition, Prime Minister Indira Gandhi's state visits to the United Kingdom and France further helped break ice with the United States and block any pro-Pakistan resolution in the United Nations. The victory also defined India's much broader role in foreign politics, as many countries in the world would come to realize. थोड़ा शिमला एग्रीमेंट पढ़ते हैं, खत्म हो गया लड़ाई तो। हाँ, हाँ, जय भारती साहब नमस्कार, कहाँ आ गए? अरे दादा प्रणाम। हाँ जी प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम बाजवा जी, ईरान में जी, इंडिया टू जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। अनएक्सपेक्टेड कॉल्स दादा, अभी भी जब चल रही थी तो एक कॉल थी मेरी। Shimla Agreement देशवर अंदर आना है क्या? आजा। was a peace treaty signed between India and Pakistan on the 2nd of July 1972 in Shimla, the capital city of the Indian state of Himachal Pradesh. It followed the Indo-Pakistani War of 1971, which began after India intervened in East Pakistan as an ally of Bengali rebels who were fighting against the Pakistani state forces in the Bangladesh Liberation War. The Indian intervention proved decisive in the war and led to East Pakistan's breakaway from its union with West Pakistan and the emergence of the independent state of Bangladesh. The treaty's official purpose was stated to serve as a way for both countries to put an end to the conflict and confrontation that had hitherto marred their relations, and to conceive the steps to be taken for further normalization of India-Pakistani relations, while also laying down the principles that should govern their future interactions. Details of the Shimla Agreement. The treaty was signed in Shimla, in India, by Zulfikar Ali Bhutto, the President of Pakistan, and Indira Gandhi, the Prime Minister of India. The agreement also paved the way for diplomatic recognition of Bangladesh by Pakistan. Technically, the document was signed at 40 hours, that means 12:40 रात को, in the night of 3rd of July. Despite this, official documents are dated 2nd of July 1972. Some of the major outcomes of the Shimla Agreement are: both countries will settle their differences by peaceful means through bilateral negotiations. India has many a times maintained that Kashmir dispute is a bilateral issue and must be settled through bilateral negotiations as per the Shimla Agreement 1972, and thus has denied any third-party intervention, even that of the United Nations. The agreement converted
the ceasefire line of 17th of December 1971 into the line of control between India and Pakistan, and it was agreed that neither side shall seek to alter it unilaterally, irrespective of mutual differences and legal interpretations. Many Indian bureaucrats have later argued that a tacit agreement to convert this LOC into international border was reached during a one-to-one meeting between the two heads of government. However, Pakistani bureaucrats have denied any such thing. This identification of a new ceasefire line by both the states has been argued by India as making the United Nations military observers group in India and Pakistan insignificant. As according to India, the purpose of UNMOGIP was to monitor the ceasefire line as identified in the Karachi Agreement of 1949, which no longer exists. However, Pakistan have a different take on this issue, and both countries still host the UN mission. The agreement has not prevented the relationship between the two countries from deteriorating to the point of armed conflict. Most recently in the Kargil War of 1999 and Operation Make Good of 1984, India seized all of the inhospitable Siachen Glacier region where the frontier had been clearly not defined in the agreement, possibly as the area was thought too barren to be controversial. This was considered as a violation of the Shimla Agreement by Pakistan. Most of the subsequent deaths in the Siachen conflict have been from natural disasters, that is, avalanches in 2010, 12, and 16. The Shimla Agreement, a bilateral relations between India and Pakistan, was signed by Prime Minister Indira Gandhi and Zulfikar Ali Bhutto. In Jammu and Jammu and Kashmir, Kashmir, the line of control resulting from ceasefire of 17 December shall be respected by both sides without prejudice to the recognized position of either side. Neither side shall seek to alter it unilaterally, irrespective of mutual differences and legal interpretation. Both sides further undertake to refrain from the threat or the use of force in violation of this line. The withdrawal of shall commence upon entry into force of the agreement and shall be completed within period of 30 days. This agreement will be subject to ratification by both countries. अब इस पे किधर लिखा है कि जो जमीन हमने ली थी उसको वापस कर देंगे, ये कर देंगे, कहाँ लिखा है? कहीं नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है. वही मैं देख रहा था जब आप स्क्रॉल कर रहे हैं, कहीं नहीं लिखा है. अब agreed as follows देखिए ना, नीचे तो दिया है. So what is this then? नहीं है सर, इसमें तो जमीन वापस लेने का देने का बात ही नहीं है. नहीं है ना कहीं? नहीं है सर, नहीं है सर, नहीं है.
अब कमेंट मारो सर आप लोग, मैं थोड़ा सा शिमला एग्रीमेंट ढूंढ रहा हूँ, इसमें कमेंट है। हाँ जी विजय जी, आपको पता है जनरल मानेक शाह का कमेंट शिमला एग्रीमेंट के ऊपर जनरल मानेक शाह ने बोला था कि इंदिरा गांधी वेंट टू शिमला एंड मेड अ कंप्लीट एस आउट ऑफ हर इन फ्रंट ऑफ भुट्टो। रियली? अरे वो जनरल मानिक शाह 93,000 सोल्जर्स को दे दिया बिना किसे बिना बिना कुछ लिए। और संदीप, वो जो किताब मैंने पढ़ी है अभी, शी वाज पुशिंग मानिक शाह टू स्टार्ट समटाइम इन मई जून, और वो कह रहा था मानसून स्टार्ट हो जाएगी, हमारा सब कुछ फंस जाएगा वहां पे। हाँ जी बिल्कुल ठीक। हाँ, अगर ये डिस्कस कर लिया तो ठीक है, नहीं तो मानिक शाह ने कहा कि मेरे को टाइम चाहिए, आई वुड टेल यू व्हेन वी आर रेडी। वो तो चाहती थी कि मिडिल ऑफ द ईयर घुस जाओ। जो 65 की लड़ाई थी ना, वो अगस्त सितंबर में हुई थी। पहले अप्रैल में हुई थी रन ऑफ कच्छ में, फिर अगस्त सितंबर में हुई थी। उसकी मेन कारण वो स्टेलमेट कहते हैं इसी वजह से कि क्योंकि सितंबर तब मानसून आ गया था, और दिसंबर में स्टार्ट करने का मतलब ये था कि एक बार बारिश वगैरह बरसात वगैरह निकल जाए फिर आराम से करेंगे। और ये बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी थी। 65 में यही तो स्ट्रेटजी काम नहीं की ना, उन्होंने सोचा ही नहीं कि हमने जो अगस्त में स्टार्ट करने का मतलब मानसून सीजन से अगस्त में इंडिया में तो हमेशा से कितने हजारों सालों से पता है अगस्त में तो हर जगह पानी होता है। और अगर मानसून खत्म भी हो गया है, द ग्राउंड इज स्टिल वेट। बांग्लादेश में तो मतलब ऐसे मार्शी एरिया है तो हाँ, बांग्लादेश इज अ मार्शी कंट्री, लॉट ऑफ वाटर बॉडीज आर देयर एंड रिवर्स, तो पूरा टैंक वगैरह फंस जाता है कीचड़ में। हाँ, इवन दिसंबर में जब बांग्लादेश की लड़ाई हुई, दिसंबर में भी बहुत सारी सोल्जर्स को एयरलिफ्ट किया गया हेलीकॉप्टर से, क्योंकि क्रॉस नहीं कर सकते थे। हाँ, या शिमला मानिक एग्रीमेंट शाह को तो तो बहुत बहुत हैरान किया था ना उसके बाद। आई थिंक हिज पेंशन वाज स्टॉप्ड, ऐसा कुछ था। राइट। हाँ जी या हाँ, उनको तो पैसे नहीं मिलते थे ना उसके बाद, कुछ दिन के बाद। लास्ट में जब भी वो वहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट थे ना ऊटी में, तो जाकर के शायद एपीजे अब्दुल कलाम ने उनको कुछ दिया था, ऐसा कुछ था। तो ही सेड अब तो मैं मरने वाला हूँ, मुझे क्या करने का पेंशन, उसने फिर वो शायद सोल्जर फंड में कुछ डाल दिया था, ऐसा कुछ था। अरे दादा, एक और इंसिडेंट बताता हूँ। एक बड़े सीनियर हमारे वो थे आर्मी के, जिनको आर्मी चीफ बनना था, राजस्थान से थे, और ही वाज बैचलर। उसको राजीव गांधी का फोन आया तो उसने बोला कि मैं अभी पूजा कर रहा हूँ, और राजीव गांधी को बोलो कि मैं पूजा के बाद। उसको उसने सुपरसीड करवा दिया किसी और को। उसका नाम था शैतान सिंह और हनुमान सिंह समथिंग। ये अभी 2-3 साल पहले ये यूट्यूब पे ये इंसिडेंट आया, उसकी पिक्चर आई समथिंग। ही डिडंट केयर अबाउट इट। ही वाज द नेक्स्ट वन टू बिकम एन आर्मी चीफ ड्यूरिंग राजीव गांधी टाइम। तो इन कांग्रेस ने तो ये काम तक किए हैं। वो मेजर शैतान सिंह थे या भारती जी? नहीं, वो मेजर शैतान सिंह वो लद्दाख वाले नहीं, ये दूसरे थे। हाँ, जनरल थे कोई, शैतान सिंह वही नाम होगा। तेजवीर, ठीक कह रहे हो, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। बट दिस इज व्हाट राजीव गांधी डिड टू दैट। अभी आवाज पहले से बेहतर है? अभी आवाज आपकी बेहतर है, लेकिन पीछे से थोड़ा सा जैसे कोई पंखा चल रहा हो कुछ। पंखा तो बंद कर दिया मैं, पंखा बंद कर दिया। पंखे के चलते भी वो बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। हाँ, कुछ आ रहा है।
मैं बंद कर दिया हूँ, कोई पंखा उनका नहीं चल रहा। नहीं मैं कह रहा जैसे पंखा चल रहा हो, लेकिन हाउस आवाज का अभी आवाज भी है। हाँ कुछ है, समथिंग इन द इंटरनेट, समथिंग समवेयर। मैं भी अगर म्यूट करता हूँ ना, सब म्यूट है आपके अलावा, तो भी आवाज आ रही, बट इट्स ओके। पता नहीं क्या हो गया, कल से ये शुरू हुआ। पता नहीं कल से क्या हो गया। ये माइक भी बेकार है सर, ये नया माइक लिया है, ये भी बेकार है। इसमें भी आवाज आ रही है। आवाज आपकी ठीक है, बस वही आज थोड़ा सा बैकग्राउंड मुझे समझ नहीं आ रहा, जिसके देयर इज कोई समथिंग बट कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लैपटॉप गड़बड़ कर रहा है। नहीं, एकदम कुछ सुनाई नहीं दे रहा, ये बोलना। लगता है वीबी दादा निकल गए क्या? हाँ अच्छा नहीं वो हाँ जी, बोल रहा हूँ कि एकदम कुछ नहीं सुनाई दे रहा, अभी जैसे बोल रहा हूँ। जी दादा अभी सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? सुनाई तो दे रहा है, लेकिन वो 2 दिन से पहले जो आवाज थी ना आपकी, वो थोड़ी हाँ जी, डिफरेंट फ्रॉम यस्टरडे। सब कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम है। अभी भी वही प्रॉब्लम है। अब वो बैकग्राउंड नॉइज तो आ रहा है। आ रहा है, तो मैं हाँ सेटिंग चेंज कर दिया हूँ, सब किया हूँ। सेटिंग्स में जाकर मैं वो इको कैंसलेशन सब कर दिया, तो फिर गड़बड़ लेकिन आवाज किया। आ रही है दादा, काम काम चल रहा है, कोई बात नहीं। पढ़ूं क्या? हाँ, हाँ पढ़िए। Manik Shah triumphed despite some unflattering views. Manik Shah earned his glory. File photo. Then 1971 war account failed to scatter the myth. Shimla agreement resulted in the conversion of ceasefire line into LOC. Besides laying stress on this major outcome was obtained even after Indira Gandhi was venerated as Durga and some as the victorious general of Indian first military triumph in 1,000 years. The strategy committee has long argued that military gains were frittered away at the negotiation table. हाँ वही सर जो बोल रहे थे वही बात। Major जैसे General बोल रहे Ashok K. Mehta, retired military commentator, 1971 war India-Pakistan war was a brilliant and comprehensive military victory which gave birth to a nation. The grand strategy resulted in the unconditional surrender of 93,000 prisoners of war, capture of 5,000 square kilometer in the west, and humiliation of Pakistan military. When Prime Minister Indira Gandhi went to Shimla, she was the victor armed with strategic gain, while Prime Minister Zulfikar Ali Bhutto was the defeated and depleted leader. The Shimla agreement resulted in the following: conversion of ceasefire line into LOC. अच्छा. Concept of bilateralism and peaceful non-use of force, resolution of dispute, and C. Head of both states would meet for a final settlement of the Kashmir issue. This major outcome were obtained even after Indira Gandhi came to be venerated as Durga and Sam Manekshaw as the victorious of this. The strategy committee had long argued that military gains were frittered away. The Indian diplomat corps have not accepted this failure gracefully. So we now have seasoned diplomat Chandrasekhar Das Gupta book India and Bangladesh Liberation War, the definitive story, which had been hailed as myth shattering. Das Gupta claim are based on painstaking research from archival material, but as Sarmila Bose, Oxford University, wrote in the Dead Reckoning Memories of 1971, that most of the what is written were partisan account
not history. She wants evidence to tell the story and testimony of participant eyewitnesses account to become building blocks of chronicling and analyzing memoirs and official document. That war is a poorly documented is a fact. Equally, PN Haksar, DP Dhar and PN Dhar, all distinguished civil service account, are in many way partisan. Das Gupta definitive account is a valiant effort in countering the critique of the foreign and civil services during and after the war. क्या कहना चाहता क्या है? Das Gupta declaration of Shimla outcome rationale for delaying military intervention and portrayal of Maniksa as no great leader contradict conventional wisdom. When Indira Gandhi summoned Maniksa for a cabinet meeting in April following the military crackdown in East Pakistan, he told her that immediate military invasion would fail as time was required to construct infrastructure, logistic makeup shortfall in equipment, avoid monsoon in riverine terrain, and allow northern passes to close to prevent Chinese intervention. In fact, Deputy General J.F.R. Jacob, ये यहूदी था, Jew था. In his book Surrender at Dhaka, Birth of Nation, has arrogated the need for more time to his recommendation from the Eastern Command. But Das Gupta says that even before Indira Gandhi called in Maniksa, she already made up her mind that more time was needed for political and diplomatic preparation, as non-interference was held sacred and intervention was not kosher. It was Haksar who dissuaded Gandhi from early intervention, so Gandhi intended to delay action coincided with Maniksa recommendation. What is the big deal in uncanny strategic political military congruence? That Maniksa stole the limelight is another matter. क्या दुश्मन है क्या उसका मानिकसा का? Similarly, on the outcome of Shimla, Das Gupta tells us that India's aim was the liberation of Bangladesh, period. That was achieved in entirety on 16 December 1971. Following the abject surrender of Pakistani forces, Gandhi went to Shimla with several essays up sleeves, 93,000 prisoners of 5,000 territory and the West, and 195 Pakistani POI to be tried for war crime in Bangladesh. Das Gupta says India's subsidiary aim was to convert ceasefire line into LOC and secure a treaty encapsulating bipartisan non-use of force and final settlement of Kashmir. The Shimla agreement was held from so and so, and that talks had failed was leaked to journalists on second. Bhutto sought another meeting with Gandhi after dinner to break the deadlock and clinch favorable deal with just sweet of sleeps. अच्छा. मैंने कहने का मतलब ये है कि हाथ में इतना था, मतलब हमारे हाथ में बहुत कुछ था कार्ड खेलने का, तो उसको यूज नहीं किया गया सही ढंग से. दादा, मैं आपको कोर ऑफ द स्टोरी बताता हूँ. कोर ऑफ द स्टोरी ये है कि जवाहरलाल नेहरू से लेके राहुल गांधी तक किसी का भी डीएनए ना तो हिंदू ही है ना इंडियन है. अभी जिंदा है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अभी जिंदा है. इसका डीएनए निकाल लो. अभी मर तो नहीं गया है ना, जिंदा है. इसलिए ये हमेशा जीती हुई बाजी इंडिया को हराते हैं, क्योंकि ये जो है उस टाइम हार गए और इनके हाथ में सत्ता नहीं आई अंग्रेजों के जाने के बाद. इनको ये गुस्सा है अंदर. और नहीं तो आज भी जिंदा है, आप डीएनए निकाल के देख लो. नहीं, उसमें कुछ नहीं निकलेगा, वो सबका एक ही निकलेगा. निकलेगा पैट्रिलिनियज का निकलेगा. ऐसा नहीं है डीएनए खत्म हो जाए. वो नहीं कि बोल रहा हूँ मैं, मतलब वैसे तो हैप्लो ग्रुप ये सब जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ही मुसलमान हिंदू का करीब करीब एक ही है. नहीं दादा, जब ये कॉन्सेंट्रेट हुए ना यहाँ पे क्या नाम है इंडिया से बाहर, तो डीएनए जो है कॉन्सेंट्रेशन वहाँ का दिखाएगा. कहाँ ये आपका आउटसाइड इंडिया का म्यूटेशन वहाँ भी तो कुछ हुई है ना. अगर बाहर का यूरोपियन हो तो अलग दिखाएगा, लेकिन इंडियन डीएनए का सैंपल स्टडी सब लोग किए हुए हैं. दादा इंडियन नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, इसका डीएनए इंडियन नहीं है. ये इंडियन नहीं है, ये मुगल्स के राहुल गांधी का लेफ्ट तो इंडियन नहीं है. राहुल गांधी का तो इंडियन है ही नहीं. अब वो तो उनकी तो कब्रें बनी नहीं तो उनका डीएनए निकाल लिया जाता.
कोई खास मतलब रिजल्ट आपको आएगा नहीं, इतना बता सकता मैं। थोड़ा सा मुझे जेनेटिक्स के बारे में पता है, कोई खास फायदा नहीं होगा इससे। कोई भी आप अपना मुसलमान का निकालो, हिंदू का निकालो, साउथ से निकालो, कहीं से निकालो, हमारा ये सब कॉन्टिनेंट का डीएनए स्ट्रक्चर करीब करीब एक ही निकलेगा। थोड़ा सा आदिवासी में फर्क था, हल्का फर्क था, बाकी सबका देखिए एक ही आएगा। इंटरनेट में है अवेलेबल, डीएनए स्टडी का रिपोर्ट आपको मिल जाएगा। इन सब गलत बोलगा ना, कोई तमिल आदमी का डीएनए निकालिए और बंगाली का निकालिए, एक ही निकलेगा। नहीं, what is the what you have understood from this entire exercise of liberating Bangladesh from Pakistan, this and that? What Indra wanted to do, like क्या दादा ये चक्कर होता? क्लैरिटी ही नहीं थी, उसके अंदर क्लैरिटी ही नहीं थी। And if she wanted to create a name for herself, that was on her side, she seized the opportunity, but she flickered away, as has been rightly pointed out in that article we read. She flickered away all her. निक्सन और किसिंजर क्या बात कर रहे थे कि इन्वेजन ऑफ मतलब क्या इन्वेजन ऑफ इंडिया इनटू ईस्ट पाकिस्तान विल encourage Soviet Union or something like that, na? Soviet Union to attack China. That means this war was engineered by Soviet Union. ठीक, बाजवा साहब। दादा इंजीनियर खैर सोवियत यूनियन ने तो कम करी होगी, यूएस ने ज्यादा करी है। नहीं, सुनो एक मिनट, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जितने भी ईस्ट पाकिस्तान के जो लीडर थे ना, अवामी लीग का मुजीबुर रहमान, दे वर ऑल कम्युनिस्ट। दादा ये कम्युनिस्ट 16 और लेते रहते इस्लामिस्ट ही हैं। नहीं, फिर भी जो हम लोगों ने कल स्ट्रीम की थी उसके हिसाब से ज्यादातर जितने भी लोग थे, इंक्लूडिंग दैट सोहरावर्दी, ही वाज आल्सो अ कम्युनिस्ट। तो सोवियत वांटेड इन्फ्लुएंस। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब इन लोगों ने इंदिरा जी को, ये मेरा अपना एनालिसिस है, मैं गलत हो सकता हूँ, जब इंदिरा जी को इन लोगों ने कांग्रेस के ओल्ड गार्ड से अलग करके अलग पार्टी बनाने का बोला, 69 में जब कांग्रेस स्प्लिट हुई, और उसके बाद में 71 में जब मिड टर्म पॉल हुए, मिड टर्म पॉल जब हो रहे थे, देखो एक बात सुनो, मुक्ति वाहिनी का जो बवाल शुरू हुआ है ना वहां पे ईस्ट पाकिस्तान में, और इंडिया में जो इलेक्शन शुरू हुए हैं, उनके डेट जो है ऑलमोस्ट सिमिलर है, ये ध्यान रखना। होली के आसपास में बवाल, यहाँ पे इलेक्शन थे इंडिया में, और होली के आसपास ही वहां पर बवाल शुरू हो गया था। 71 की बात बता रहा हूँ मैं, 7th में था उस समय। ये आपने सही पकड़ा। हाँ जी, पूरे ऑलमोस्ट 1 साल तक बवाल चलता रहा ना, तो ये मार्च तो में स्टार्ट हुआ। बाजवा साहब, ये तो 4 ही थी अप्रैल में लड़ाई हो जाए। राइट, हाँ जी। वो तो हार जानी थी इंडिया ने। लास्ट वीक ऑफ मार्च में शायद ये प्राइम मिनिस्टर बनी थी विद थम्पिंग मेजॉरिटी, जगजीवन राम और इसके जो चेले थे ना, ये राजा काला काकर दिनेश सिंह और सोरेन सिंह को लेकर के जो इसने अलग से पार्टी बनाई थी, बगुना वगुना थे, तो इसको कुछ 360 सीट मिल गई थी। राइट, तो इसका दिमाग खराब हो गया था, एंड शी सेड दैट ओके नाउ आई हैव कम ट्रायम्फ्ड इन इलेक्शन नाउ, इमीडिएटली उसने उंगली करनी शुरू कर दी थी, और उसी समय वहां पर बवाल शुरू हो गया था। अगर इसको मैं 1 मिनट दिखाता हूँ थोड़ा सा, अगर हम देखें तो मतलब ये जो क्या बोलते हैं उसको, ऑपरेशन, दादा क्या था वो ऑपरेशन ब्लू स्टार, क्या था वो जो इसने टिक्का खान ने किया था वहां पे? सर्च लाइट। हाँ, 1 मिनट, इसके बारे में इसको कंपेयर करो। ऑपरेशन सर्च लाइट कब हुआ था? दिसंबर 70 में शायद वहां पे इलेक्शन हुए थे ना।
पाकिस्तान में फर्स्ट इलेक्शन जो हुए थे दिसंबर 70 में हुए थे, जिसमें कि मुजीब जीते थे, ऐसा कुछ था। तो ऑपरेशन सर्चलाइट वाज लॉन्च्ड इन मार्च। देखो मैं आपको बताता हूँ, इसका थोड़ा सा बानगी दे देता हूँ। मतलब मुझे इंडियो पाकिस्तान वार को सिर्फ ये देखना था कि इंदिरा जी को कितना फायदा हुआ था, हिंदुस्तान को कितना नुकसान हुआ, तो 72 में सबको मालूम पड़ ही गया था। लेकिन शी बिकेम वर्ल्ड लीडर विच शी बैडली वांटेड। क्या ये इन मूवमेंट इन फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान इन मार्च 71 ना? जी जी। फिर क्या बोल रहा है ये? Ordered by the central government in West Pakistan, the original plan envisaged taking control of all East major Pakistan major cities on 26 March. Okay sir? हाँ। अब ये देखो, मैं आपको अपना जो इलेक्शन है, कौन सा इलेक्शन था? 52 का पहला, 57 दूसरा, 57 के बाद 62 तीसरा, 67 चौथा, पांचवा इलेक्शन ना, फिफ्थ इलेक्शन, फिफ्थ जनरल इलेक्शन था। इस परिवार ने अपने लिए सब कुछ किया है, देश गया तेल लेने, बस इतना मैं जानता हूँ। ये देखो क्या लिखा है साहब, इसको मैं आपको शेयर करता हूँ, थोड़ा देखिए इसको। स्टॉप शेयरिंग, देन शेयरिंग। मेरे बड़े भाई साहब की उस समय शादी हुई थी, हम लोग बहुत खुशी में थे कि ये हो रहा। उसी समय भाई साहब एयरफोर्स में थे, उनका आ गया था, भैया तुम ड्यूटी में वापस आ जाओ। दिखा? आ रही है। जनरल इलेक्शन वर हेल्ड बिटवीन 1st to 10th मार्च। अब 10th मार्च के बाद में रिजल्ट कब डिक्लेयर हुए होंगे? एक मिनट देखते हैं। कांग्रेस स्प्लिट हो गई, 352 सीट मिली थी इसको। तो 2 दिन के बाद में सोच लो, चलो 12 को डिक्लेयर हो गए होंगे, 12-13 को, तो 12-13 को रिजल्ट डिक्लेयर हो गए, और वहां पर जो ऑपरेशन सर्च लाइट है वो 26 मार्च के आसपास शुरू हो गया। अब बताइए, तो मौका ढूंढ रही थी, वो मिल गया। और ये मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ ये कि अगर ये हार जाती ना, तो पक्की बात है बांग्लादेश कभी लिबरेट नहीं होता। क्योंकि बेचती नहीं थी ना ये। एक्चुअली सोवियत वांटेड टोटल कंट्रोल ओवर द एरिया। लाइक देखिए, अभी एक बात बताओ, जो पहला 65 का जो समझौता करवाया ताशकंद में, वो भी सोवियत रूस ही घुसा था, अमेरिका तो दूर बैठा हुआ था। क्या जरूरत पड़ी तुम्हारे घुसने की वहां पर? और ये जो समझौता था, फिर इस समझौते को इन लोगों ने करवाया था, जो शिमला में हुआ, एग्रीमेंट तैयार किया था भुट्टो को वहां से किया जा। पहले भुट्टो ने विजिट किया था मॉस्को, उसके बाद में यहाँ आया था। पर शिमला एग्रीमेंट में मुजीब का कोई रोल ही नहीं था। नहीं, इंदिरा गांधी, मुजीब का क्या रोल होगा? मुजीब को तो अपना जो करना था कर लिया ना उसने। उस समय तो पाकिस्तान में था अरेस्टेड, वो बाद में छोड़ा गया ना, लड़ाई के बाद छोड़ा गया। जुलाई के महीने में जब हुआ था, उस समय मुजीब वाज कंसोलिडेटिंग हिज पोजीशन इन बांग्लादेश। लाइक तो जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो तो बांग्लादेश की थी, तो पाकिस्तान तो असल में बांग्लादेश है, तो माइनॉरिटी पॉपुलेशन को पाकिस्तान बन गया। हाँ, तो बात बिल्कुल सही है, इसीलिए तो इन लोग जीत गए थे। हाँ जी बीबी दादा, क्या कह रहे थे? हाँ जी, एक बात मैं फिर भूल जाऊंगा। उस दिन जब शास्त्री जी पर आपने स्ट्रीम की और आपने बताया कि शास्त्री जी का प्लान था कि मैं जब वापस आऊंगा तो हम ये लिबरलाइजेशन करेंगे, ठीक है? तो मैं सोचने लगा, अगर उस टाइम पे लिबरलाइजेशन होती
सोवियत यूनियन तो यूएसएस वो तो कम्युनिस्ट है, उनके पास क्या है भाई, जाते तो वेस्ट के पास ही ना कि आप आओ और हमें टेक्नोलॉजी, अगर आईआईटी अमेरिकन ने बनाई है उसकी हेल्प से, तो हो सकता है रशियंस को भी ये पता हो कि दिस इज व्हाट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्लानिंग, और इस आदमी को एलिमिनेट करो, क्योंकि अगर लिबरलाइजेशन होती है तो दैट मीन्स वेस्ट अमेरिका में आएगा, सॉरी ये वेस्ट इंडिया में आएगा विद टेक्नोलॉजी अदर थिंग, तो उनकी फुटहोल्ड आ गया वेस्टर्न कंट्रीज का। तो मैं उस दिन से यही सोच रहा था, तो रशियन हैड मोर रीजन टू एलिमिनेट ताकि ये चीज इंप्लीमेंट ही ना हो। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? पक्का सर, सोवियत रूस नेवर वांटेड इंडिया टू गो आउट ऑफ द क्लचेज एंड दे, उधर तो दूसरा ये है, दे वांटेड अ पपेट इन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ना, उनको तो अपना पपेट चाहिए था ना। हाँ, तो हो सकता हाँ जी, है देखिए 1991 में यूएसएसआर डिसॉल्व होता है और 1991 में इंडिया लिबरलाइज होता है। यस 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 राइट, यस, ठीक जोड़ा संदीप, बिल्कुल ठीक जोड़ा, राइट। तो 47 से लेके 91 तक रशिया का पूरा कंट्रोल था इंडियन इकोनॉमी पे। नहीं, ये शास्त्री जी की एलिमिनेशन में जिसने जब दावा, ये चीज मुझे नहीं पता थी कि शास्त्री जी का प्लान था, क्योंकि मैं तो पैदा नहीं हुआ था उस टाइम पे, तो कि ये भाई इसको लिबरलाइज करो अपनी इकोनॉमी को, दे हैड ऑल द रीजन, रशियंस हैड, यूएसएसआर हैड ऑल द रीजन। अच्छा एक बात बताओ, चलो ठीक है, लोग बाग हमारे को जो स्ट्रीम बाद में सुनेंगे वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बोलेंगे। राजीव गांधी was killed on 21st May 1991. ठीक है, And Soviet Rus was disintegrated, I think somewhere in September or August, क्या कौन सा, एक मिनट देखना पड़ेगा प्रदीप, देखो ना, अगस्त 1991, गर्भचौक बराबर। तो हमारे यहाँ पर जब गवर्नमेंट बनी सर, वो तो मेरे ख्याल में जून या मई में ये इलेक्शन पूरे हो गए थे, उसके बाद में शायद जून या जुलाई में बनी, जब इसको मनमोहन सिंह को बुलाया था ना अमेरिका से कि भाई तू आजा और फाइनेंस मिनिस्टर बन जा, राइट। हाँ जी, दैट मीन्स अगर मैं ये बोलूं कि राजीव गांधी was assassinated with the help of KGB because Gorbachev knew that USSR is going to break. क्या बोले? बिल्कुल, या क्योंकि ऑलरेडी पोलैंड वगैरह सब कंट्रीज ब्रेक हो रहे थे, उनकी रेवोल्यूशन चल रही थी, इवेंचुअली इनका होना ही था। 91 में तो टोटली डिसॉल्व हो गया ना, उससे 10 साल पहले स्टार्ट हो गया था। तो जय भारती साहब का कहना सही है, मतलब यूएसए एंड गर्बचोव, मैं यूएसएसआर की बात नहीं कर रहा हूँ, यूएसए एंड गर्बचोव बोथ ज्वाइंट टुगेदर टू मेक इंडिया अ लिबरल कंट्री, लाइक जो ग्लोबल इकोनॉमी को एक्सेप्ट करे, ये करे वो करे, ऐसा कुछ उनका प्लान रहा होगा। अदरवाइज हिंदुस्तान में तो कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता ना इन दोनों शक्तियों के बिना। हाँ जी, जी दादा, लिब्रांडू बनाना था ना, वो तो शुरुआत से ही कोशिश हो रही थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम से भी हो रही थी, फाइनली 76 में डिक्लेयर कर ही दिया ना, तो वो इंदिरा गांधी ने, मोमिना बेगम। तो आजकल तकलीफ हो रही है, मोदी को क्यों डिस्टेबलाइज करने के चक्कर में, सारे के सारे इसी चक्कर में ना कि मोदी सुनता नहीं है किसी की। अभी देखो अभी क्या हो रहा है, अभी ये जितनी भी सोशलिस्ट लिबरल फोर्सेस हैं, ये इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के थ्रू कर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में नया शुरू हो गया गे मैरिज का इंडिया में। जी दादा, मैंने कल बोला था ये बीबी दादा को भी। ओ भाई ओपन मत बोलो है इसको, प्लीज इसको बैक स्टेज में रखो। बिना किसी बात में मुद्दे शुरू हो जाते हैं इंडिया में, जिन्हें को लेना देना नहीं किसी चीज से। कल ठंडा था है मजूमदार दादा,
कल जो उसकी हियरिंग चल रही थी ना, उसमें थोड़ा ठंडा था, वो कौल साहब ज्यादा बोल रहे थे। आज तक सुना है? हाँ, जो आज की जो हियरिंग हुई ना उसमें वो, हाँ, हाँ सॉरी, कल मैं बोल रहा हूँ, आज की हियरिंग में थोड़ा ठंडा था, ही वाज नॉट, ठंडा था, वही हाँ मैं ज्यादा बोल नहीं बोल रहा था वो। कब निकलेगा जजमेंट? क्या करें। ये जो सोरोस और डेमोक्रेटिक पार्टी है ना अमेरिका की, सिर्फ इंडिया में नहीं, ये सऊदी अरेबिया में भी कर रहे हैं, युगांडा में भी, कीनिया में भी, सब जगह सब और भी पता नहीं कहाँ कहाँ ऐसा कर रहे हैं। और ये हर जगह का इन्होंने बना हुआ है। इन्हें पता है कि इंडिया में तो पार्लियामेंट के थ्रू जाना चाहिए, पर पार्लियामेंट के थ्रू नहीं जाएंगे। इन्होंने अपने जज खड़े किए हुए हैं। कोई ऐसे बिना बात में PIL फाइल कर देता है और ये मुद्दा शुरू हो जाता है। उस टाइम में तो, पुराने जमाने में तो पॉलिटिक्स पूरी की पूरी पॉलिटिकल पार्टी इनके हाथ में थी, कम्युनिस्टों के, लिबरल्स के हाथ में। अभी ज्यादा आजकल ये, पावर नहीं रह गई ना, उन पार्टीज की पावर नहीं रह गई है। तो हाँ, जो जो इकोसिस्टम इन्होंने फिट कर रखा है ना, ये उसके थ्रू अब कर रहे हैं। राइट। बधाई हो आप लोगों को। एक पप्पू तो चला गया, अब तो इलेक्शन लड़ सकता नहीं हुआ। पप्पू की बलि देके वो वाजपेयी को लाएंगे। वाजपेयी का रास्ता साफ करा गया है। हो सकता है भाई जीजा जी को भी उतार दें। वो कम एम्बिशियस बंदा थोड़ी है। राइट, हाँ। करेक्ट। लेकिन वही है, थोड़े दिन बाद नेक्स्ट टॉपिक बताओ, नेक्स्ट टॉपिक बताओ। 2.5 घंटा हो गया है, नाउ विल क्लोज इट। कोई अच्छा सा टॉपिक ध्यान आ रहा हो? अरे वो माइनॉरिटीज के बारे में दादा बात की थी ना, इंडिया और पाकिस्तान में, अच्छा, उस पे करते हैं। क्या हाल किया 47 से लेके अब तक, क्या कहते हो? दादा एक काम करो, या तो मेरा वाला डॉक्यूमेंट कर डालो। तो मैं एक साथ सारे एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे को बना देता हूँ मेंबर, और तुम स्ट्रीम रन करो, फिर स्ट्रीम रन करो। उस दिन वाली कर लूंगा ना मैं। सर क्या बोल रहे हैं? सर को क्या अरे भाई, अभी मैंने दादा को, मजूमदार को मेंबर बना रखा है ना, मैं ओनर हूँ। दादा मेंबर, तो मैं तुम्हारे को देता हूँ ना पूरा कंट्रोल। स्ट्रीम चलाओ ना, कितनों को जोड़ना है, कितनों को घटाना है, करते रहो ना, हमारे को जोड़ घटा देना। एडमिन मेंबर नहीं दादा। हाँ, वो एडमिन होता है दादा। मैं सोच रहा हूँ, मैंने कहा पता नहीं दादा कोई पार्टी बना रहे। हाँ, वही एडमिन की बात कर रहा हूँ। ठीक है दादा, कल मैं वो डॉक्यूमेंट कर देता हूँ। करो, थोड़ा सा बता दो दर्शकों को कि क्या क्या टॉपिक है, क्या नहीं है। हाँ, उस हाँ, दिन हाँ। बैक स्टेज में देखा। ये डॉक्यूमेंट बेसिकली हमारे जितने भी इंडिया के दुश्मन हैं, सारे एक लिस्ट में आ गए हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जितनी भी हमारी कमजोरियां हैं, सब एक लिस्ट में आ गई हैं। बस कंसोलिडेटेड लिस्ट है हमारी कमजोरियों की, हमारे इंटरनल थ्रेट्स की और एक्सटर्नल थ्रेट्स की। So what do you think would be the topic like? क्या enemies of India? Internal and external threats of India and our weaknesses. Internal threat Internal and external threats of India and our weaknesses. our fault line। अच्छा, weaknesses। हाँ, fault lines ऐसा कह लो। ठीक है। ये तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। करने तो ना सर, इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, कम से कम टेंशन नहीं लो दादा, 1 घंटे में निपटाऊंगा। सिर्फ मीडिया को ही ले लो। इंडिया प्रोसेस। नहीं दादा, अभी उनकी लिस्टिंग नहीं हो रही है। अभी सिर्फ जो है कैटेगराइज कर रहे हैं। लिस्टिंग बाद में करेंगे। नीति जितना ये कवर करता है कवर कर सकता है, बाकी एड ऑन आप दे देना, बाकी उसमें अगर जो और भी हो। जी प्रदीप, अभी AM दादा ने बोला है ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस, और यही था मेरा टिप ऑफ द टॉप। तो इसका एक एक्रोनिम बना देते हैं, BIF,
They are राइट, BIF, हाँ। ठीक है, ये एक्रोनिम ठीक है पॉपुलर कर दादा, देते हैं अपने इस पे। BIF। BIF, they are BIF. How about बिल्कुल सही that? दादा, बिल्कुल सही दादा। हाँ चलो ठीक है, हम लोग बंद करते हैं, मुझे कहीं जाना है। ओके ठीक है दादा। ओके, तो धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू, धन्यवाद जी आप। और कल अभी का बैक टॉपिक जो है बैक साइड प्रदीप में रुकते बताएगा। हैं थोड़ा सा, बैक साइड बैक में साइड रुक में लेते हैं हम हम। लोग। हाँ हाँ तो तुम अपना बात आप करते रहो, जाके, मैं निकलता हूँ। हाँ दादा, ओके, ठीक है आप काम दादा, अपना निपटा लो। नमस्कार। सबको प्रणाम, बैक साइड में जी। मिलते हैं फिर अभी। जय भाई हिंद, वंदे अरे मातरम। थोड़ा वो तो कर दो यार, अपील तो कर दो पब्लिक से, शेयर शेयर करने हाँ के हाँ लिए, वो करो ना हाँ, यार। भाई हाँ, लोगों को लाइक बस करो, हाँ, तेजवीर शेयर चुप करो, चलो करो, सब्सक्राइब करो। तेजवीर जी तेजवीर भाई दादा। ये तुम करो थोड़ा, आप ये बोलो तुम इसको, करो। इस बारे में, शेयर को क्या, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्या करें, जो बोलना होता है बोलो। जी, जितने भी व्यूवर देख रहे हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक भी करें। बोलो पंजाबी में बोल लाइक दे, भी जिससे करें। कि वो पाकिस्तानी लोग भी आके देखें इसको। हाँ, और वो घंटा जोर से बजाएं। घंटा जोर से बजाए। अरे ये पाकिस्तानी कोई और ही घंटा बजा लेंगे। अरे कल कल अवगढ़ ने उसको, मोहम्मद अली को बहुत बजाया यार। अच्छा, कौन सा चैनल पे थे? वो ओम के चैनल में आया हुआ था, ओम के चैनल में आया हुआ था। अच्छा, ओम का भी चैनल है। अरे वो सब तो वैसे ही करते रहते हैं जी, भाई। औघड़ वगैरह खार खाए घूम रहा है। कल तो बड़ी गालियां दे रहा था मुझे पढ़ाना अरे उसने। वो क्या करता है, हमारी नॉलेज लेके जाता है, वहां पे पूरा पूरा पेल देता है उन लोगों को, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, बलूचिस्तान में ऐसा हुआ, और तुम लोगों ने बांग्लादेश में ये किया, वो किया, सब 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 लपेटा उसने कल। अच्छी बात है दादा। तो ठीक है। चलो दादा ठीक है। हमारा काम तो यही है ना, यंग जनरेशन को इन्फॉर्मेशन दे दो, उसके बाद ये जहाँ भी जाके पेलना है जिसको पेले, क्या फर्क पड़ता है। दादा बहुत बढ़िया फुर्सत से पेलते हैं हम लोग, जब पेलते हैं तो बोलने लायक ही नहीं छोड़ते, एकदम मुंह बंद रहता है। फिर वो ढूंढता कोई और आ जाए भाई किसी और से। एक बार तो बीवी दादा को बुला रहा था, मैंने कहा रहने दे, वो ज्यादा पेलेंगे। ठीक है, अच्छा अभी आज हमारे सवेरे वाला राहुल गांधी वाला मेरा देख लिया कि नहीं वीडियो? अभी नहीं देखा दादा। मैं देखा हूँ अभी नहीं सर। दादा, 36 मिनट का है वो, देख इतना लेना देख लिया उसको, कि मैंने 36 मिनट जजमेंट का। को, जो हाँ जो जजमेंट में जहां पर उन्होंने जजमेंट साइड किया है उसको मैंने वो कर दिया है, बाकी मैंने पूरा पढ़ लिया है कि क्या है क्या नहीं है। और ये 5वीं पीढ़ी है अभी दादा मेरा एक पार्लियामेंट। क्वेश्चन है। हाँ। दादा, हम्म। ये इंडिया को वीटो पावर मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसका क्या है अभी? अरे यार बहुत दूर है वो, अभी छोड़ दे। तेजवीर भाई, जी, मेरे हिसाब से वीटो पावर नहीं लेनी चाहिए। परमानेंट मेंबर ऑल्टरनेट, बना रहे थे हम लोगों को अरे नहीं दादा, यूएन मैं कुछ वाले। और कह रहा हूँ, मैं कुछ और कह रहा हूँ। हम लोग चाइना इंडिया का को नाम ले देंगे। इंडिया को वीटो नहीं लेनी चाहिए, बल्कि पैरेलल एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करनी चाहिए, क्योंकि यूएन की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। आप अगर पैरेलल खड़ी करोगे, उससे बढ़िया खड़ी होगी, उससे ज़्यादा पावरफुल होगी। इस चीज़ पे कंसंट्रेट इंडिया को साथ के साथ करना चाहिए। अच्छा मैं वीडियो बंद कर बिल्कुल, ये रहा बात हूँ, सही है। ये लाइव स्ट्रीम बंद कर रहा हूँ। सबको नमस्कार, वंदे ठीक है, मातरम, नमस्कार सर। भारत माता की जय जय, हिंद, भारत जय वंदे माता हिंद। की मातरम। जय। ओके? जी सर, नमस्कार।